In a time of legend, the twin dragons of wisdom and life guarded the rich and fertile East. Bountiful as it was, it begat the desire of the ravenous Helios Empire that laid onslaught upon this land. The dragons prevailed, and the Empire's forces were cast out in defeat. But a priest of Helios left a terrible curse of endless sand upon the land. Its people were left with nothing but desolation and hunger. In a noble sacrifice, one of the dragons gave its body to restore the land, turning into the mountains that climbed and the rivers that flowed. The other dragon gathered all its might to mold an impregnable barrier, then vanished without a trace. And while the land was thus restored to its former glory, the benevolent guardians were no more. Their memory, however, stayed immortal in the name of this land, Dragon Kingdom. The ages past. Stories of the dragons turned into legends, but the people carried on in their worship. Each year, a festival known as the Day of Blessings was held. Tributes were made to honor the dragons that gave life to the kingdom. Their favor promised a gentle sky and a rich harvest. But during this year's festivities, something was amiss. Across the border, Helios loomed with its relentless gaze. And within, the imperial family was in bitter strife. Princess Yue and Prince Ji each saw the Day of Blessings as an opportune time to claim the throne. They each called to arms and raised their troops. And so once more, the stage was set for battle to shape the fate of the Dragon Kingdom. Hey guys, the hero we are introducing today is Wukong. Wukong is a nimble warrior who is capable of dealing massive damage. With his weapon at hand, Wukong can hardly fall in battles. Passive, God of War. Each time Wukong uses a skill, his next normal attack can jump onto the target, dealing additional physical damage. First skill, Shadow Clone. Wukong creates a clone of himself, which deals damage to surrounding enemies when it vanishes. The skill can be casted on motion and boosts Wukong movement speed for 1 second. Combined with other skills, Wukong can always outplay the enemies in battles. Second skill, Great Sage. Wukong swiftly tumbles to the target area. The skill can also increase Wukong's physical and magical defense. With Great Sage, Wukong can easily disengage from battles when he's low on health. Ultimate Monkey Business. Wukong unleashes his inner rage, causing damage and stunning nearby enemies. Monkey Business is an AoE crowd control spell, which Wukong often uses to wipe out the enemy team with the help of his allies. Wukong is an expert in assassinations. He can use Shadow Clone to approach the prey, then burst the target down using Monkey Business and Shadow Clone. Wukong can also use Shadow Clone and Great Sage to trick the enemy team. In battles, Wukong can use Great Sage first to jump into the enemy team, followed up with the other skills to clean up the battlefield. Overall, Wukong is a nimble warrior who can deal massive burst damage, granting his team to an easy victory. Thanks for watching today's episode on Wukong.
और ये स्टार्ट बिल्कुल। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक ज़बरदस्त किस्म की गेम आपके सामने आने वाली है एंड दिस इज़ AOV टैलेंट हंट्स। और ये एक ज़बरदस्त किस्म की गेम रहने वाली है आज के दिन के अंदर। सेमीफाइनल आज के दिन के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे देखेंगे टीम्स यहाँ पे किस तरह परफॉर्म करती है। सीज़न 1 रहने वाला है भाई। ये एक AOV का टूर्नामेंट पहला स्टेप रहेगा एगॉन ई स्पोर्ट्स की तरफ से, और लेट्स सी कि क्या बनता है। उसकी नहीं जा रही। बिल्कुल एक कम्पैटिटिव लॉबी रहती है यहाँ पर। और भाई सबसे पहले वेलकम टू द सेमीफाइनल्स ऑफ AOV टैलेंट हंट सीजन 1 ब्रॉट टू यू बाय एगॉन ई स्पोर्ट्स। और ये एक ज़बरदस्त किस्म का टूर्नामेंट आपके लिए लेके आया गया है इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के टूर्नामेंट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। इट्स मीन एगॉन जो है यहाँ पर भी ई स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है मिस्टीक। बट मेरे साथ यहाँ पे मिस्टीक रहने वाले हैं गाइज। और माय नेम इज़ हारिस AKA डीमन। यहाँ पे डीमन के नाम से भी सारे मुझे जानते होंगे। बट टुडे हम यहाँ पर भी आपके सामने लेके आए हैं AOV अरीना ऑफ विलोर टैलेंट हंट सीजन 1। और ये सीजन 1 कोई मतलब कि छोटा मोटा सीजन नहीं रहने वाला, एक ज़बरदस्त किस्म का सीजन रहेगा। एक ज़बरदस्त किस्म की टीम्स यहाँ पर रहने वाली हैं हमारे सामने। कुछ ही देर के अंदर हम यहाँ पर भी देखेंगे कि किस तरह की लॉबीज़ हमारे सामने आती हैं, किस तरह टीम्स एक दूसरे को यहाँ पर ज्वाइन करके सामने एक मतलब कि प्रॉपर फाइट हम यहाँ पर विटनेस करेंगे। और जिस तरह की गेम प्ले हमें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक छोटे से कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर एक इतनी बेहतरीन गेम AOV मतलब कि भी आपको एक नेक्स्ट लेवल फन यहाँ पर भी प्रेजेंट करती है। एक नेक्स्ट लेवल का गेम प्ले की अगर बात की जाए इस गेम को लेके, अगर आप यहाँ पर देखने का तो मज़ा ही डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पर भी देख रहे हो तो आपको एटलीस्ट इतना अंदाज़ा होगा कि यार कि AOV एक ऐसी गेम रहने वाली है जो कि पाकिस्तान के अंदर एगॉन ई स्पोर्ट्स लेके आया है। और ये छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं रहने वाला, क्योंकि आगे जाकर ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टूर्नामेंट आगे बनता हुआ नज़र आएगा। दिस इज़ एक्चुअली अमेजिंग कि इस आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की जो गेम रहने वाली है ये आगे बढ़ के काफ़ी एक बड़ा नाम बनता हुआ नजर आएगा। एंड एगॉन ऑफ कोर्स, अगर एगॉन की नाम लिया जाए जितना भी नाम लूँ उतना कम रहेगा, क्योंकि एगॉन ही वो रहने वाला है सीन जो कि एक आगे जाके इतना बड़ा नाम और बनाता हुआ नजर आएगा। डिफरेंट ई स्पोर्ट्स के अंदर अगर बात की जाए, ई स्पोर्ट्स को लेके एगॉन जो है काफ़ी अच्छी गेम्स लेके आ रहा है। नॉट जस्ट वन बट बहुत और भी बहुत सारी। बट राइट नाउ हम बात करेंगे जो कि एगॉन यहाँ पर लेके आया हमारे साथ AOV टैलेंट हंट। ये जस्ट एक टैलेंट हंट रहने वाला है, बट आगे जाके एक बहुत बड़ा मतलब 50 लाख का प्राइस पूल बनेगा। और देखेंगे उसका क्या सीन बनता है। आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी तरफ भी जाएंगे। राइट नाउ अगर बात की जाए, हमारी लॉबी जो है थोड़ी ही देर के अंदर भी एक स्टेबल लॉबी बन जाएगी। सारे के सारे प्लेयर्स ज्वाइन इन हो रहे हैं। जैसे ही मैच स्टार्ट होगा हम उसको देखेंगे। और बाकी हीरोज़ की अगर बात की जाए, AOV की अगर बात की जाए, तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अभी जो नया रहने वाला है, जिसको इस गेम का अंदाज़ा नहीं रहने वाला, अगर मैं उसकी अगर बात करूँ तो भाई आपको बताता हूँ AOV इज़ लाइक ए हीरो बेस्ड थिंग। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का सीन रहने वाला है। और देखते हैं कि क्या सीन बनेगा आगे जाकर, क्योंकि किस तरह खेलते हुए नजर आएगी टीम्स।
ये भी आहिस्ता आहिस्ता भाई हम बताएंगे आपको, सारा विटनेस करेंगे। बट राइट नाउ अगर बात की जाए हीरोज़ की, हीरोज़ हर हीरो के पास एक अपनी एक स्पेशल पावर रहने वाली है, एक एबिलिटी रहने वाली है। हर हीरो अपनी अपनी गेम को लेके आगे बढ़ता है। लाइक कुछ स्पोर्टर होते हैं लाइक टैंक, असैसिन, मार्क्समैन, मतलब हर मतलब कि भी प्लेयर की, हर हीरो की एक डिफरेंट पावर रहने वाली है और एक डिफरेंट वैल्यू रहने वाली है इन गेम। और ये इन गेम वैल्यू जो है वो ऑफ कोर्स अगर बात की जाए टीम्स जो प्लेयर्स जहाँ पे खेलते होंगे इन कंपेटिटिव लॉबी, वो भी हमें देखने को मिलेगी। बट मिस्टीक मेरे साथ रहने वाली है, मिस्टीक से भी हम बात करेंगे कि मिस्टीक क्या इस इतनी बड़ी गेम को लेके, व्हाट यू थिंक? ओके यस एंड बट यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुकी है। हीरोज की अगर बात की जाए तो हीरोज आहे राइट नाउ अगर बात की जाए यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह सीन रहने वाला है। कुछ प्लेयर्स यहाँ पर भी रोटेट करके लाइक ड्रैगन बॉयज की बात करें, यहाँ पर ये लड़का जाके थोड़ा सा रिसोर्स जमा करेगा। देन आफ्टर दैट यहाँ पर अपने लिए कुछ आइटम्स इकट्ठी करेंगे। आइटम्स काफ़ी मैटर करती हैं इन दिस गेम। और यहाँ पर अगर बात की जाए हीरोज आपको नजर आ रहे होंगे टीम्स के 5v5 मैच रहने वाला है। और यहाँ पर अगर बात की जाए बेस्ट ऑफ 5 हम आज के दिन के अंदर इन दोनों टीमों के सामने विटनेस करेंगे। टीम एरो इज लाइक एक ऐसी टीम रहने वाली जो कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का गेम प्ले करते करते यहाँ तक पहुँची है। नो डाउट बाकी टीम्स भी यहाँ पर इतना नाम बनाकर आई हैं, तो लेट्स सी कि भी कौन सी टीम कितने लेवल पे जाके यहाँ पर हमारे सामने गेम प्ले निकालती है। एंड राइट नाउ अगर बात की जाए, जिस तरह की बात की जाए यहाँ पर पहले ही अगर फाइट हो जाएगी, काफ़ी डैमेज यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। डिफरेंट टीम्स यहाँ पर जिस तरह भी मूव करते नजर आ रही हैं। बट राइट नाउ दिस इज द टीम। एचपी की बात करूँ, एचपी काफ़ी यहाँ पर रहने वाली है कम। और यहाँ पर अगर बात की जाए एबिलिटीज़ को यहाँ पर भी ज़रूर लेवल अप किया जाएगा ताकि यहाँ पर एक अच्छी फाइट की जाए। यहाँ पर भी अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा रिस्टोर भी किया जाएगा। यहाँ पर अपनी जो है हील को रिवाइव भी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हील अब जितना जल्दी किया जाए उतना ही अच्छा बनेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हीरोज़ की बात की जाए तो हीरो जो है डिफरेंट एबिलिटीज़ यहाँ पर लेके रखता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ऑलरेडी ये जो प्लेयर्स हैं दे आर स्लोली बिल्डिंग अप देयर स्ट्रेटजीज, बिल्डिंग अप देयर एचपी पॉइंट्स एज वेल एज एबिलिटीज। क्योंकि इस गेम का यही जो ज्यादातर रहता है कि आप डिफरेंट मॉन्स्टर्स को डिफीट करके, अगले प्लेयर की हीरोज को डिफीट करके, जैसे कि यहाँ पर नैंस भी किए, यहाँ पर की एचपी काफी कम हो चुकी है, बट ही इज मेकिंग अ वाइज डिसीजन कि वो अपने टावर के पास रह रहे हैं, बिकॉज उनका जो टावर है इट्स गोइंग टू प्रोवाइड दिस सर्कल ऑफ हेल्थ फॉर देम एज वेल एज डिफेंस। जो भी प्लेयर अपने टावर के करीब रहेगा उसको एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी मिलेगी जिधर ही कैन अब वो वापस उन्होंने रिकॉल किया, ही केम बैक टू बेस और एचपी फुल करके ही इज मेकिंग दैट डिसीजन टू गो फाइट अगेन। द हीरो दैट ही इज यूजिंग आई थिंक इज ऑर्सर व्हिच इज अ वॉरियर। एंड जो वॉरियर्स होते हैं वो बेसिकली दे नोन फॉर देयर अमेजिंग फाइटिंग स्किल्स। एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे अच्छा एक प्लेयर उन्होंने जो मॉन्स्टर है डार्क स्लेयर, इसको डिफीट किया है। दिस थिंग दैट यू गेट आउट ऑफ डिफीटिंग दिस मॉन्स्टर इज कि आपकी एबिलिटी भी इंप्रूव होती है, आपके स्किल्स भी अपग्रेड होते हैं, एंड यू गेट एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइंस, जिसकी वजह से आप अपनी एबिलिटीज फर्दर अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर एरो की एचपी काफी लो दिखाई देती है, बट यहाँ पर वो माइट कॉलम के साथ एक फाइट इंगेज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिधर पर उनकी एचपी फिर लो हो रही है। और यहाँ पर अगली साइड पे एक मिनियन के साथ फाइट इंगेज, एंड देयर वी गो। I think that is the first, no, that's the fourth kill of the game, and the red side has already given up 4 deaths to the blue side, जिनकी तरफ से सिर्फ एक kill है, and Arrowhead की तरफ से already एक उनकी HP काफी लो दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो पीछे जा रहे हैं। And टीम आगे से आप बताएंगे जैसे ये रेड टीम सफर कर रही है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब बिल्कुल यहाँ पर मैं राइट नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि कौन से हीरोज अपने आप को जल्दी से जल्दी लेवल अप कर रहे हैं। और राइट नाउ अगर आप देखें, राइट नाउ अगर होन की बात करूँ, MLB दिस टीम जस्ट गेटिंग द लेवल अप अगेन एंड अगेन। यहाँ पर लेवल अप करते हुए काफ़ी तेज़ी से नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जितनी जल्दी ये लेवल अप करेंगे, अपनी एबिलिटीज़ को यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, आइटम्स जितनी जल्दी इकट्ठे करेंगे। बट राइट नाउ अगर बात की जाए दिस टीम हैव लाइक ए गुड
नॉलेज ऑफ दिस गेम, क्योंकि आइटम्स की अगर बात की जाए, आइटम्स को खाली देखें, हर प्लेयर अपने लिए यहाँ पर अच्छी आइटम्स यहाँ पर इकट्ठे करते नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा सीन बनाते हुए नजर आएगी। पावर्स जितनी आपकी एबिलिटीज़ की पावर ज़्यादा होने वाली हैं, उतना ही प्लेयर्स सामने की टीम के ऊपर यहाँ पर डैमेज ज़्यादा निकालता हुआ नजर आएगा, और ये डैमेज ज़्यादा निकाल के ही विन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी देर एक एग्जीक्यूट किया जाएगा किसी को, उसके बाद टावर को जितनी देर डिस्ट्रॉय किया जाएगा, मेन टावर तक पहुंचते पहुंचते वही टीम पहुंचेगी जिसकी एबिलिटी जो है वो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। राइट नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे 6 इस प्लेयर की राइट 7 पे पहुंच चुका है लड़का। एंड दूसरी साइड पे अगर बात कीजिए, जो अभी तक जिस एबिलिटीज सबसे ज्यादा रहने वाली है एरो की रहने वाली है, एरो हैव लाइक 6। ओके दिस इज गुड। यहाँ पर भी टीम्स जो है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर रही हैं, और ये हर प्लेयर यहाँ पर ये अंदाज़ा रखता है कि भी कितनी जल्दी हमने यहाँ पर भी एक अच्छा गेम प्ले निकालनी है। बट राइट नाउ प्लेयर्स काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का गेम प्ले करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी मॉन्स्टर्स को यहाँ पर भी किल करके यहाँ पर भी रिसोर्स इकट्ठा करने की प्रॉपर कोशिश की जा रही है। सारे के सारे प्लेयर्स मिलके ये जो है एक जद्दोजहद कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर सीन अच्छा बनते हुए नजर आए। व्हाट यू थिंक भाई, एक ज़बरदस्त किस्म का एक सिस्टम जो हमारे सामने बनता हुआ नजर आ रहा है मिस्टेक, ये काफ़ी एक गेम जो है काफ़ी इंटरेस्ट लेके आ रही है राइट नाउ। एक हीरोज़ की अगर बात की जाए एबिलिटी, हर प्लेयर की एक डिफरेंट एबिलिटी रहने वाली है। कुछ यहाँ पे सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, टावर्स को सेव करते नजर आ रहे हैं, बट लुक एट दिस फाइट, एक ज़बरदस्त किस्म का डैमेज कैरी करके एक प्लेयर यहाँ पर भी वापस भेज जाते हैं, बट यही टाइम रहेगा कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर दोबारा से आएंगे। लुक एट दिस प्लेयर इज डाउन राइट नाउ। कुछ ही टाइम के बाद ये वापस रिवाइव हो जाएगा और वापस फाइट के अंदर बैठ जाएगा, बट तब तक टीम यहाँ पर भी 4 प्लेयर्स के साथ यहाँ पर भी जिंदा रहने वाली है। तो 4 प्लेयर्स वर्सेस 5 प्लेयर्स, ये काफ़ी एक हैवी डिसीजन रहने वाला है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की ना कि यहाँ पर उनकी एबिलिटीज काफी शोकेस हो रही है, दिस शोज कि इनको एक्सपीरियंस कितना है इस गेम का। बिकॉज़ यू नो व्हेन आई वाज प्लेइंग लास्ट नाइट, तो आई जस्ट यू नो हेड फर्स्ट डोव इनटू एंगेजिंग द अदर एनिमीज हीरोज। बट बात इनकी ये है कि वो अपना यू नो स्किल लेवल कितना अपग्रेड करें, अपने आइटम्स कितने कलेक्ट करें, अपना आर्मर अपग्रेड किया, अपनी एचपी। एंड यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि वो एक बुश में खड़े होके, बिकॉज़ यू नो इन स्टैंडिंग इन द बुश मेक्स यू इनविजिबल, तो यहाँ पर बाबा सीए ने अपने आप को रिकॉल किया जिससे उनकी एचपी बेस जाके वापस फुल हुई है। एंड नाउ ही इज रनिंग अहेड टू ट्राई एंड एंगेज द अदर टीम्स एनिमीज। तो बात यहाँ पे रहती है कि नॉट ओनली डू दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ स्किल, एंड ना ही ये गेम को इतना इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, बट इनका टीम यू नो इनका टीम वर्क कितना अच्छा है। जैसे आप देख सकते हैं मैप पे एक ही जगह पे ऑल 4 हीरोज ऑफ द ब्लू टीम आर एंगेजिंग विद 3 हीरोज ऑफ द रेड टीम। एंड यहाँ पर वो बार-बार डार्क स्लेयर व्हिच इज that gives you enormous amount of power and HP and mana regen, तो उनको यू नो लेके अपनी एबिलिटीज बार-बार अपग्रेड करें। यहाँ पर एक डिफेंस टावर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है with the help of minions, and there we go, he has destroyed a defense tower which gives you you know you get closer and closer to the enemy's base। तो यहाँ पे जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि जो रेड प्लेयर्स हैं काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, they're working you know mostly through the team, ये डिफरेंट मॉन्स्टर्स को बार-बार डिफीट करके अपनी एबिलिटीज काफी अपग्रेड कर चुके हैं टू द लेवल ऑफ 10 and 8। एंड एज वी कैन सी यू नो ब्लू टीम इज रियली पुटिंग अप अ गुड फाइट, एंड ऑल्दो यहाँ पर अगेन उनका एक और डिफेंस टावर डिस्ट्रॉय किया गया है। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं टॉप लेन के थ्रू उनके 2 टावर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, which means they have to be very careful, and on the bot lane as well they've only got 1 tower left with half HP। जिस तरह अगर ये दोनों टावर्स इनके गिर गए तो the red team has open access to their base, which means that they will be deploying heavy weapons to try and engage them। बिल्कुल, यहाँ पर एक और टावर को यहाँ पर भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बट लेट्स सी अभी और कहानी काफ़ी यहाँ पर बाकी रहने वाली है। एंड प्लेयर्स की अगर बात की जाए, प्लेयर्स यहाँ पर मिल के अगर बात की जाए, नो डाउट द थीम रेड यही कहेंगे राइट नाउ कि टीम रेड जो रहने वाली है वो यहाँ पर काफ़ी एक नॉलेज के साथ विन करने के लिए आज के दिन के लिए आई है। बट दूसरी साइड अगर बात की जाए वो भी देखने लायक रहने वाली फाइट। अगर बात की जाए प्लेयर्स की अगर बात की जाए, वो हर प्लेयर को यहाँ पर भी एक चांस दे रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपनी एबिलिटी को यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग करता नजर आए। एंड यहाँ पर 1 by 1 सारे के सारे टावर्स को यहाँ पर भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एंड राइट नाउ अगर बात की जाए मेन टावर तक पहुँच के ही यहाँ पर सीन पता चलेगा क्या सीन रहने वाला है। बट दूसरी साइड पर अगर बात की जाए राइट नाउ प्लेयर्स देखते हैं किस तरह का रहने वाला सीन यहाँ पर, क्योंकि अगर बात की जाए एबिलिटीज़ का प्रॉपर यूज दिस टीम इज doing well actually। look at this, मतलब कि अभी सीन यहाँ पर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रहने वाला टीम रेड का। बट बाकी अभी सीन देखने को मिलेगा कुछ ही देर के अंदर कि यहाँ पर कौन सी टीम जो है वो एक अच्छा सीन बनाते हुए नजर आएगी। बट राइट नाउ
टावर्स यहाँ पर भी डिस्ट्रॉय होके जिस तरह का सीन बनता हुआ नजर आया। वंस अगेन यहाँ पर फाइट्स जो है वो प्लेयर्स एक दूसरे के साथ में एंगेजमेंट यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है प्लेयर्स जो है थोड़ा सा ये समझना चाह रहे हैं कि क्या सीन रहने वाला है। एबिलिटीज यहाँ पर भी बात की जाए तो अभी तक टीम्स जो है वो यहाँ पर भी अपने लिए रिसोर्स अभी भी जमा करते हुए नजर आ रही है, अपने लिए और पावर्स इकट्ठी करते हुए नजर आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस टीम। और अभी भी अगर बात की जाए ये टीम आगे बढ़ के यहाँ पर इनके लिए काफ़ी सर का दर्द बनते हुए नजर आएगी। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए जो माहौल बना हुआ है फाइट्स का, मतलब कि ये देखने लायक है यार, मतलब एक इंटरेस्टिंग फिगर बनते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर ये सीन नहीं रहने वाला कि आप उतरो एंड डायरेक्टली एक फाइट के अंदर भी मुबतला हो जाओ। यहाँ पर भी आपके लिए रिसोर्स इकट्ठे करना, यहाँ पर भी आइटम इकट्ठे करना, अपनी एबिलिटी को लेवल अप करना, मतलब कि हर चीज़ आपको यहाँ पर एक साथ मिल के एज ए टीम मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पर भी आपका सीन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनने वाला। जी बिल्कुल रेड इज ऑन rampage जिस तरह वो बेस में पहुंच गए and they have destroyed all the towers and I think they're very close to destroying the base of the blue team because they're working not only with teamwork but also a lot of abilities and skills and ये काफी करीब आ चुके हैं। I think they have destroyed almost 7 towers of the blue team and you know उन्होंने अपनी साइड सेट की हुई on the base, उन्होंने all 3 lanes से team blue को घेर दिया है। We have one hero in the top lane, we have 2 heroes in the bot lane and we have a hero that is entering from the middle lane and the thing is कि अगर आप उनकी stats compare करें तो we have 3 versus a whopping 28 kills. So red knows they've come here to play and they've come here to win and we can see not only their skill but their talent and their teamwork जिस तरह वो बार-बार destroy करें and you know यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि बाबासिर is again you know he's taking in his health, वो अपनी HP revive करें because they're not only going to you know going in for the kill, वो बहुत strategically सोच रहे हैं, they're showing that how you know deeply they know the game and how deep इनकी knowledge है because they go back again and again to the base ताकि इनकी HP revive हो सके and I think team blue is you know they have to put up a good fight if they want to win because इनकी base already काफी half HP पे आ चुकी है, a few more hits, a few more you know enemy attacks and their base is actually going to be destroyed and victory is going to be there for the red team and there we go with a double kill and a bloodbath. Team red is on a rampage, Violet is already you know I think 3 kills तो ये kill ले चुके हैं and shut down, they've already killed another team as well and I think that they have destroyed, yes there we go, victory for the red team. यस, विक्ट्री फॉर द रेड टीम एंड रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं एंड लेट्स सी कि यहाँ पर अगर बात की जाए रिजल्ट्स की, पर टीम्स ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खेला है। मिस्टेक अमेजिंग परफॉर्मेंस। प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो दूसरी टीम भी यहाँ पर भी आई थिंक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तैयार होके आई हुई है, वो भी यहाँ पर भी पहला मैच रहने वाला है। यहाँ पर भी अभी कुछ कहानी अभी और बाकी रहने वाली है, मतलब कि ये तो अभी स्टार्टअप रहने वाला था, तो यहाँ पर उनको अंदाज़ा हो चुका है कि सामने हमारी किस टीम के साथ पाला पड़ चुके हैं। तो नाउ इन नेक्स्ट राउंड वो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर प्रिपेयर होके आएंगे, यहाँ पर एक अच्छी गेम प्ले और करते हुए नजर आएंगे। बट राइट नाउ एक ये रिजल्ट्स आपके सामने थे और अब सीन जो है हम आपको वापस से लेके आएंगे एक नया मैच के साथ। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। नहीं, मेरा पहली दफ़ा गूगल मीट के थ्रू नहीं हो रहा। मे बी पता नहीं प्रोजेक्ट नहीं हो रही, क्या इश्यू है? डिस्कनेक्ट करके फिर से आऊँ?
अच्छा, ठीक है। चलें फिर इस तरह ही सही है, आ रही है इस तरह लाइक व्हाट्सएप के थ्रू भी। मैंने पता है शुरू में गलती से बोल दिया कि 7
Agon Esports. सो वेलकम बैक गाइज वंस अगेन हम वापस आ चुके हैं। एक नया मैच कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। एओवी टैलेंट हंट यहाँ पर सीजन 1 आपके सामने लेके आ चुके हैं और ये सारा जो आपके पास रंगारंग टूर्नामेंट आपके सामने लेके आए हैं वो दिस इज़ ओनली ऑन एगॉन ई स्पोर्ट्स। एगॉन ई स्पोर्ट्स से एक खूबसूरत मैच आपके सामने यहाँ पर लेके आ चुके हैं एंड ये सिर्फ शुरुआत रहने वाली है गाइज, शुरुआत रहने वाली है। यस आपने सही सुना, ये एक शुरुआत रहने वाली है। ये सीजन 2 जो आने वाला है विद ए बिग हैगी प्राइस पूल, एक बड़े प्राइस पूल के साथ वंस अगेन वापस आएगा। मिस्टीक मेरे साथ रहने वाली है, वन ऑफ द टैलेंटेड कास्टर आउट देयर इन पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त किस्म की कास्टर रहने वाली है मिस्टीक वेलकम बैक। भी पहला मैच तो हमने यहाँ पर देख लिया है, यहाँ पर हमने टीम्स की पावर को अंदाज़ा कर लिया कि टीम की कितनी पावर रहने वाली है, टीम्स किस तरह यहाँ पे परफॉर्म करते नजर आ रही हैं। दिस इज़ एक्चुअली अमेजिंग भाई, एबिलिटीज़ को यहाँ पर प्रॉपर यूज़ करना, भाई प्लेयर्स का एक दूसरे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करना, लाइक दिस इज़ एक्चुअली अमेजिंग। एक ज़बरदस्त किस्म की गेम रहने वाली है एओवी, काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्ट डेवलप होता है इसको देख के। और यहाँ पर अगर बात कीजिए एक अच्छी कंपेटिटिव लॉबी बनते हुए नजर आती है। 5v5 की एक खूबसूरत लॉबी, एक खूबसूरत फाइट, एक प्रॉपरली एक वेल मेंटेन अगर बात की जाए मिस्टीक, मतलब कि भी प्लेयर्स प्रॉपरली एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं, प्रॉपरली गेम प्ले का यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। और यही टाइम रहेगा कि भी ये जो दूसरा मैच रहने वाला है टीम एरो को कम बैक करना है। क्योंकि अगर बात की जाए टीम एरो की, तो टीम एरो ने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के आगे की तरफ बढ़ना है। क्योंकि ये टीम एरो का जो सीन रहने वाला है, पहला मैच में तो उनकी वो एक मज़े की परफॉर्मेंस नहीं निकली। हालांकि टीम एरो एक वेल नोन टीम रहने वाली है, क्योंकि ऑफकोर्स एओवी के अंदर उन्होंने कहा यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। दिस इज़ एक्चुअली अमेजिंग। क्या कहेंगी मिस्टीक?
यस, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल इश्यूज की वजह से यहाँ पर हमारा जो है वंस अगेन मिस्टेक की आवाज़ यहाँ पर हमारी नहीं कनेक्ट हो पा रही, बट आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट नो वरीज गाइस। यहाँ पर भी बेस्ट ऑफ 5 के मैचेस चलते हुए नजर आ रहे हैं एंड नेक्स्ट लॉबी हमारे पास रेडी हो चुकी है। वंस अगेन मैं आपको यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कराता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पर रहने वाली है मिस्टीक एक टैलेंटेड कास्टर रहने वाली हैं एंड वंस अगेन वी वेलकम बैक मिस्टीक। आई होप यहाँ पर अभी आपकी आवाज़ जो है ना प्रॉपरली ऑडियंस तक पहुँचे। जी बिल्कुल, thank you for the introduction, Demon, and yes, I'm glad to be back, and now we're coming back to the beginning. So basically, अभी तो बिल्कुल शुरुआत हुई है, we're gonna be having a best of 5 matches. So I think हम थोड़ा सा leeway दे सकते हैं Team Arrow को कि they were not, I'm sure from their side they gave us the best that they could, but esports is this tournament, it's this place, it's this battleground where you have to be prepared for anything. You have to be prepared for something unpredictable. So I think जो स्वागत team Necro Esports ने उनका किया was something out of the extraordinary था. And I think Team Arrow had this time, this tiny break to sit back and think where they went wrong या where उन्होंने थोड़ा सा lag किया, जिधर उन्होंने allow किया Team Necro को to dominate them so amazingly. I think थोड़ा सा उनकी तरफ से एक beginners थोड़ा सा उन्होंने lag किया कि where they didn't really go for abilities, they didn't go to upgrade their skills, because जैसे हम stats पे दे सकते थे तो जो टीम नेक्रो थी, जो हमारे पास रेड टीम थी, उन्होंने अबिस्मल ड्रैगन को 2 दफा डिफीट किया, उन्होंने डार्क स्लेयर को 1 दफा डिफीट किया, और उनके ओवरऑल स्किल लेवल्स और अपग्रेड लेवल्स 10 to 11 to 8 तक पहुंच गए थे। Welcome to Arena of Valhalla. Slow and catching up, they were a bit थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे एकदम गेम शुरू हुई, they didn't have the time to regroup, to build up with their teamwork. फर्स्ट मैच में हमेशा थोड़ा सा होता है कि आप लोग थोड़ा सा sit back करते, you take it a bit easy, but I think they've learned their lesson and they're going to show us something amazing right now. They're going to come back and fight with a bang. So I'm really excited for this match, and I'm waiting to see what Team Arrow is going to bring to the table, and if they have the ability and the skills, and obviously because this is the talent hunt, they have the talent to maybe sweep Necro Esports off of their feet. So I'm really excited to see where this match is going to go and how they're going to build up with their abilities and their teamwork, and of course killing other monsters and gaining up to a skill level to defeat the other team. एग्जैक्टली यहाँ पर अगर बात की जाए राइट नाउ टावर्स के पास यहाँ पर भी थोड़ा प्रॉपर्टी प्लेयर्स जो है एक दूसरे के पैरा देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस टाइम ऑफ कोर्स एरो थोड़ा सा यहाँ पर प्रिपेयर होके आई होगी, क्योंकि एरो ने ऑलरेडी एक स्टार्टअप लॉस दे दी है। अब वो बिल्कुल ये नहीं चाह रहे होंगे कि अब वंस अगेन उनकी तरफ से कुछ इस तरह की कुछ भी एडवांटेज जो है, कोई छोटा सा भी एडवांटेज जो है सामने वाली टीम को दिया जाए, क्योंकि एरो इज़ लाइक ए टीम जो कि काफ़ी एक अच्छी टीम रहने वाली है। और लेट्स सी कि क्या बनता है, क्योंकि आगे का सीन कुछ ही देर के अंदर हमारे सामने बनता हुआ नजर आएगा। और बट वंस अगेन अगर बात की जाए राइट नाउ जो भी प्रॉपर्ली टीम प्रिपेयर करते हुए नजर आ रही हैं वो भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा सीन यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। और राइट नाउ अगर बात कीजिए कम बैक टू द गेम, और यहाँ पे फाइट्स हमारे सामने चलते हुए नजर आ रही है। वंस अगेन अगर बात कीजिए राइट नाउ अगर देखा जाए मिस्टीक प्लेज एबिलिटी को यहाँ पर प्रॉपरली अपग्रेड करते नजर आ रहे हैं, बट इस टाइम एरो जो है यहाँ पर भी प्रॉपरली अगर बात की जाए एरो की, तो एरो यहाँ पर भी तैयार बैठी हुई है कि यहाँ पर इस दफ़ा एबिलिटी के ऊपर जोर उन्होंने देना है। यहाँ पर प्रॉपरली अगर बात की जाए किल्स पे यहाँ पर जोर नहीं देना, यहाँ पर प्लेयर्स को यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए नॉक नहीं करना, यहाँ पर सीन बनाते हुए नजर आएंगे। बट एरो यहाँ पर जल्दी से अपनी एबिलिटीज़ को यहाँ पर अभी मेंटेन करते हुए नजर आएगी, एंड देन दिस टीम इज मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पर बात की जाए मॉन्स्टर्स को यहाँ पर भी एलिमिनेट करती है, यहाँ पर भी अपने लिए यहाँ पर रिसोर्स जमा किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात रहने वाली है एमएल की तरफ से। और यहाँ पर अगर बात की जाए दूसरी साइड पे एरो की, तो एरो इज डूइंग द सेम थिंग, बट राइट नाउ अगर बात की जाए एरो हैव द 4 एबिलिटी पावर एंड सेम गोज टू दी अदर टीम। यहाँ पर भी उनकी उस टीम के ऊपर भी यहाँ पर सेम ये चीज़ रहने वाली है। बट एरो टुडे इन दिस मैच, क्योंकि सेकंड मैच रहने वाला है, ऑलरेडी वो एक छोटा सा लॉस पहले ही स्टार्ट में भी दे चुके हैं, बट राइट नाउ उनको यहाँ पर सीन बनाता हुआ देखने को मिलेगा। बट लुक एट दिस फाइनली एक और प्लेयर को यहाँ पर डाउन किया जाता है। एरो इज वंस अगेन यहाँ पर थोड़ा सा लो मुझे नजर आ रही है मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर अगर बात कीजिए वंस अगेन दिस टीम इज प्लेइंग वेल। यहाँ पर जिस तरह प्लेयर्स यहाँ पे खेलते नजर आ रहे हैं, स्पेशली अगर दानियाल बेग की बात करूँ, उनकी जो बैक एंड से सपोर्ट देखने को मिल रही है, दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। जी बिल्कुल, and actually I think my screen is suffering a bit of lag because I'm
great fight, and because they're bouncing back from their previous previous game, they've learned their lesson and they're going to go for those skills and upgradation of their their build up. And यहाँ पर they're actually going for a gank, which is a gang up kill, where they're going to इकट्ठे दोनों जो उनकी team players हैं, they're going to gang up on this other player and they're going to go for that kill. And right now जो वो एक अक्लमंद चीज कर रहे हैं, strategic चीज कर रहे हैं, is where they're staying in pairs or in trios. So they're taking out two of the team red players, and there we go. Exactly. There we go. They have single-handedly, actually, sorry, not single-handedly, in a trio, three-handedly taken down two of Team Red's players, and they're going again and again, and they're staying close to their defense towers. Now, this is a strategy that I really wanted to build into a bit, because जो Team Red ने हमें पिछले गेम में दिखाया, उसको दो गुना करके टीम एरो हमें यहाँ दिखा रही है, जहाँ के ना वो सिर्फ अपनी टीम के थ्रू फाइट करें, बट ऑल्सो अपने डिफेंस टावर्स की रेंज में रह रहे हैं, ताकि if they go too much out of their range, they're going to be exposed to the team red heroes, where they're going to have to fight a lot. But यहाँ पर when they stay in the range of their own defense towers, आधा काम तो उनका हम उनके टावर्स उनके लिए करेंगे. और यहाँ पर as you can see, they've actually killed the Invisible Dragon, and they're again teaming up on two of the team red players, and they're going to take them down, and they've fixed their strategy, and again they're building on that teamwork, where they're not only upgrading their skills and experiences and abilities, जहाँ पर वो अपनी ultimate level ability बार यूज की जा रही है, जहाँ से हम देख सकते हैं कि बाबसी and Ray, they're going to keep gaining those abilities for the good of the entire team. एग्जैक्टली यहाँ पर जितना वो एबिलिटी अपनी टीम के लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं. प्लेयर्स भी अगर बात की जाए बैकएंड से भी प्रॉपर्ली सपोर्ट भी दिए जा रहे हैं, कि यहाँ पर भी प्रॉपर्ली सपोर्ट के साथ टीम जो है अपनी एबिलिटीज़ को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाते जा रही है. और यहाँ पर यही टाइम रहता है कि टीम्स अपने प्लेयर्स के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहे हैं. मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए, अभी प्लेयर्स की आपस में जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन प्लेयर्स की आपस में स्ट्रॉन्ग रहेगी तो गेम उतनी ही तगड़ी बनते हुए नजर आएगी. राइट नाउ एरो की बात की जाए तो एरो यहाँ पर भी स्टेबल खड़ी हुई है. किल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एरो के ऊपर बैक टू बैक किल्स यहाँ पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि अगर बात की जाए, लुक एट दिस, एरो जस्ट ओनली 2 kills एंड 3 ओके, थर्ड किल्स यहाँ पर उनके पास आ चुकी है. बट लेट्स सी कि अगर बात की जाए यहाँ पर मेंटेनेंस की, यहाँ पर प्लेयर्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली मेंटेन करके ही खेल पाएंगे. क्योंकि अगर बात की जाए टावर अभी तक कोई भी यहाँ पर डाउन नहीं हुआ. प्लेयर्स अभी अपनी बेस को यहाँ पर स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे हुए हैं. नो डाउट यहाँ पर अगर बात की थोड़ा सा स्लो डाउन एरो को जरूर किया गया, बट एरो इज कमिंग बैक विद मतलब मोर स्ट्रॉन्गर. मतलब प्लेयर्स की बात की जाए तो वो भी एबिलिटी के ऊपर काफ़ी एक ज़बरदस्त किस्म का जोर दिया हुआ उन्होंने. बट दूसरी साइड पे अगर देखें, एबिलिटी को प्रॉपरली एक यूज़ किया जा रहा है. मतलब कि लुक एट दिस, 9 and 10 के ऊपर बड़ी ऑलमोस्ट जाने ही वाले हैं. तो लेट्स सी कि क्या पर सीन बनता है कि यहाँ पर 10 के ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्गर अटैक पावर उनके पास आ जाती है. थोड़ा सा यहाँ पर उनका डिफेंस पावर यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर तेज़ हो जाएगी. एबिलिटीज़ यहाँ पर थोड़ी शार्प हो जाती हैं. क्योंकि अगर बात की जाए लेवल अप की, तो लो रे जो है यहाँ पर अपने लेवल 10 पे पहुँच चुका है. क्योंकि यहाँ पर अगर 10 की बात करूँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर बन चुका है. थोड़ा सा एरो को अब थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा. एरो को अब इतनी एबिलिटी को मोर स्ट्रॉन्गर करना पड़ेगा. एंड 2 टावर्स, लुक एट दिस, वंस अगेन अपने 2 टावर्स खो चुकी है मिस्टेक एरो. वंस अगेन यहाँ पर मेरे ख्याल से एरो वंस अगेन डाउन साइड पे जाते हुए नजर आ रही है मुझे. Necro Esports से कम ही रहेगा, because the more monsters that you
इमेजिन कि वो bushes में खड़े होके he's trying to be invisible and drink water to fill his HP. But the issue with that is that he's been, caught off guard, and Team Necro is just too, they're just too experienced, they're too talented, and they're, performing wonders with the way that they are, continuously fighting against Team Arrow. And Team Arrow really needs to, put up some sort of fight. They need to put up actually a solid defense, because जहाँ कि आप देख सकते हैं जो top lane है उसकी तरफ से सारे towers destroy हो चुके हैं, and ऐसा जो Team Necro है, they're going to make their way towards the base of Team Blue. And I think right now, because they do have a completely open lane, what they're doing is कि वो draw out करें Team Arrow के players, वो अपनी base से दूर करें, जिससे तक उनको मार रहे हैं, उनको बार-बार उनके kill points gain करें, gold points gain करें, जिससे अपनी abilities upgrade करें, and वो आहिस्ता-आहिस्ता जाके उनको इसी lane से tap करके उनकी base destroy करेंगे. And what do you think even of this brilliant strategy that Team Necro is employing? बिल्कुल ऐसा ही एक ज़बरदस्त किस्म का गेम प्ले देखने को मिल रहा है मिस्टेक हमें। और यहाँ पर अगर बात की जाए, नो डाउट यहाँ पर अगर 7 टावर्स यहाँ पर अपने लूज़ कर चुकी है टीम एरो, और एरो को यहाँ पर अगर बात की जाए, एरो ने जस्ट एक टावर ही भी डाउन किया है सामने वाली टीम का, बट एरो को यहाँ पर थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेक्रो की बात की जाए तो वो तो काफ़ी एक ज़बरदस्त किस्म की गेम प्ले निकालते नजर आ रही है। अपनी एबिलिटीज़ की अगर बात की जाए, 14 लेवल ऑफ एबिलिटी यहाँ पर अगर बात की जाए, भी एक ही प्लेयर एरो के पास रहने वाला है जो कि यहाँ पर 12 के एबिलिटी के साथ यहाँ पर भी लेवल के ऊपर रहने वाला है। और सामने की बात कीजिए तो यहाँ पर 3 प्लेयर्स हमें नज़र आ जाएंगे नाइक्रो वाली साइड पे। यहाँ पर उनके पास 3 प्लेयर्स हैं जो कि 12 लेवल की एबिलिटी के ऊपर यहाँ पर रहने वाले हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए, ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा एक लो एंड ज़रूर रहेगा एरो की साइड पे। एरो रिसोर्स जमा करने के लिए, आइटम जमा करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा लो डाउन यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है, बट लेट्स सी कि भी क्या सीन बनने वाला है, क्योंकि अगर बात की जाए स्टिल हमारे पास चांस अभी बहुत कम रहने वाले हैं। और यहाँ पर अभी माहौल जो है और स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है। यहाँ पर अगर बात की टावर्स की, टावर्स यहाँ पर 7 डाउन कर चुकी है, एंड स्टिल अगर बात की जाए टीम नाइक्रो की बात करूँ, यहाँ पर वो वंस अगेन जंप ऑन द नेक्स्ट टावर, वो एक और टावर की तरफ यहाँ पर जंप कर चुके हैं, और वो भी उसको भी डाउन करना चाह रहे हैं। बट 1 बाय 1 अगर बात की जाए, एरो की मैं बात करूँ, एरोस के प्लेस की बात करूँ, एक अच्छी टीम रहती थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एरो जो है यहाँ पर डोमिनेशन दिखाते हुए नजर आएगी, एक डोमिनेट करते हुए नजर आएगी, बट यहाँ पर कहानी बिल्कुल उलट चली गई है मिस्टेक। यहाँ पर कहानी बिल्कुल ऑपोजिट टीम, जिसका मैं मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था, वो टीम यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल गेम करते हुए नजर आ रही है। जैसे कि आपको भी आपके मैप पे नजर आ रहा होगा, जो टीम नेक्रो है वो कहीं भी मूव नहीं करी विदाउट देयर टीममेट्स टुगेदर, एंड वो कहीं भी आउट ऑफ रेंज नहीं जाती। एंड वन थिंग दैट आई continuously noticing is the pair that they're using up there. उनका जो एक प्लेयर है बाबा से, which I think is actually an assassin or a warrior, he is continuously backed up by a marksman or a mage. Strength के through अगली टीम को he is just fighting with his sword skills, but पीछे से उनका जो marksman और mage है वो spells और arrows की HP lower करते हैं, ताकि जो final killing blow है वो deliver किया जाए through their warrior. So this is, I think, quite an amazing strategy that they're employing, and इसी strategy के through they have reached the base of Team Arrow, where they are ganging up and all 4 of them are employing all of their abilities, and they are going to take down the base of Team Arrow and destroy it. Here you go. And there we go. Victory again for Team Necro. What a brilliant play, what a brilliant gameplay. The way that they have employed not only their skills, their abilities, teamwork से ज़्यादा जितना दिमाग लगा के उन्होंने एक कला की तरह इस गेम को बिल्कुल उड़ा के हमारे सामने रख दिया। बिल्कुल 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 जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया ना, दिस इज़ एक्चुअली अमेजिंग। भाई टीम एरो को थोड़ा सा अभी संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट मैच, 2 स्टार्टअप्स उन्होंने दे दिए हैं सामने वाली टीम को, एंड नाउ टीम एरो के पास अभी भी चांस रहने वाला है। अभी भी टीम एरो जो है वो यहाँ पर वंस बैक टू बैक अगर अपने लिए यहाँ पर सिक्योर करती है और यहाँ पर थोड़ा सा मसले बनाते हुए नजर आती है सामने वाली टीम के ऊपर, तो यहाँ पर सीन बनता हुआ कुछ नज़र आ सकता है टीम एरो के लिए। बट एरो ऑलरेडी अपने 2 पॉइंट्स, स्टार्टअप के 2 पॉइंट्स यहाँ पर सामने वाली टीम को देते हुए नजर आ रही है। मिस्टेक यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा एक और मैच यहाँ पर लूज करती है टीम एरो तो कहानी खत्म होते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल टीम, एंड आई थिंक दिस इज वन चांस फॉर टीम एरो टू regroup, to rethink, for them to sit back and think about what किधर वो गलत जा रही है, किधर वो बार-बार वो mistakes कर रहे हैं, which is allowing the other team to dominate them so completely, and they need to actually learn this. जो I was a bit disappointed to see कि इस game में भी they didn't go to build their abilities or their kills, and although they have some impressive
1000 damage to 8000 to 8000, and you can from the stats see कि किधर उन्होंने अपनी टीम बिल्कुल बैलेंस की हुई है टीम नेक्रो ने, किधर वो अपने उनके जो हीरोज हैं, उनके जो प्लेयर्स हैं, वो अपने रोल्स के अलावा अपनी टीम को एक लिफ्ट अप दे रहे हैं. So they're not playing individually, they're not playing for kills or stats, they're playing to win. And that you can see कि जिस तरह वो एक करके अगली टीम के डिफेंस टावर्स गिराते जा रहे हैं and उसके बाद वो बिल्कुल I think within 5 to 10 minutes टीम की अगली बेस में पहुंच जाते हैं. That is a feat that is quite extraordinary कि इतने कम टाइम में इतनी एक्सपीरियंस टीम के अगेंस्ट आप उनको you know बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दो. Exactly. And now we are going for a short break once again. एक छोटे से ब्रेक में चलते हैं, वापस कुछ ही देर में हम मुलाकात करते हैं आपसे.
Okay, and welcome back, guys, to the third and potentially last match. If Team Arrow does not regroup, does not prioritize their strategy, does not prioritize their teamwork, and they really need to win this match, because in the best of five, if they lose the third match, you know that this entire, this part of the match is going to be won by Team Necro Esports, and they're the ones who are going to be advancing up into the finals. So far, um, नेक्रो esports ने हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरह की डोमिनेशन दिखाई है, जिधर वो ना सिर्फ हमें बार बार एक अच्छा टीम वर्क दिखा रहे हैं, बट वो हमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज और अच्छा एक तरह का गेम प्ले भी दिखा रहे हैं, जिधर उनको ये पता है कि उन्होंने कौन से मॉन्स्टर्स टेक डाउन करने हैं, कौन सी एबिलिटीज़ अपग्रेड करनी है, कौन से स्किल्स और कौन से एक्सपीरियंस लेवल को टारगेट करना है। उसके अलावा उनकी टीम काफ़ी वेल बैलेंस्ड है, जिधर से आप देखिए उनका मेज है, दे हैव अ वॉरियर, उनके पास टैंक है, उनके पास मार्क्समैन है। और ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगी कि टीम एरो की टीम इज़ नॉट वेल बैलेंस्ड, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा एक वेल राउंडेड टीम रखी है, जिधर हर तरह का हीरो है। बट द डिफरेंस देयर इज़ कि आई थिंक दैट टीम नेक्रो इस चीज़ को बहुत ऑप्टिमाइज़ कर रही है, बहुत अच्छी तरह यूज़ करी है अपना टीम वर्क को बिल्ड करी है, जिधर उनके वॉरियर्स फोर फ्रंट पे होते हैं और उनके मेजेस और मार्क्समैन पीछे से they bring the fight to the other front. Welcome to Arena of Valor. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Prepare to engage. तो यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका है और मैच के बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। इससे मैच की अगर बात की जाए तो एरो अगर एक मैच जीत जाती है तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा और सीन आगे बनता हुआ नजर आएगा। अगर एरो लूज़ करती है तो यहाँ पर भी उनके लिए यहाँ पर भी इख्तिताम सीन बनेगा। यहाँ पर एरो ने काफ़ी मेहनत की है यहाँ पर सेमीफाइनल तक आने के लिए, बट अगर बात की जाए सेमीफाइनल पर टीम जितनी भी पहुँच के आगे तक आती है तो सीन अच्छा बनते हुए नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टीम सेमीफाइनल तक पहुँच रही है इट्स लाइक कि भी हर टीम एक नेक्स्ट लेवल की टीम रहने वाली है और ये भी काफ़ी अच्छा सीन बनता हुआ नजर आएगा। राइट नाउ अगर बात की जाए, नो डाउट एरो के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉबैक रहता है, एरो यहाँ पर थोड़ी सी लो एंड पे रहती है, बट नो डाउट यहाँ पर सीन अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। कुछ ही टाइम के अंदर देखते हैं क्या सीन बनता है क्या सीन नहीं बनता, क्योंकि टाइम टू टाइम ये चीज़ें यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आएंगी। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ भी बनते हुए नजर आ सकती है। मैच की बात कीजिए या कंडीशन की बात कीजिए तो यहाँ पर वो भी हमें कुछ ही देर के अंदर सीन अच्छा बनते हुए नजर आ सकता है। बट मेरे ख्याल से कुछ ही देर के अंदर हमें वंस अगेन हमें ज्वाइन करते हुए नजर आएंगी, वो भी हम साथ साथ देखते हैं क्या सीन बनता है क्या सीन नहीं बनता। बट टाइम टू टाइम अगर बात की जाए तो सीन जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो वो अभी बात की जाए फाइट की, एरो की बात करूं, एरो इज हेयर, एरो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भी मेंटेन खेलते हुए नजर आ रही है। काइंडली अगर बात की जाए यहाँ पर भी सीन की, टीम जो है वो अपने एक दूसरे के साथ प्रॉपरली एक वेल मेंटेन एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ गेम प्ले करते हुए नजर आ रही है। एरो यहाँ पर इस टाइम के ऊपर रिसोर्स काफ़ी अच्छे जमा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए एरो की, एरो जितने जल्दी यहाँ पर अच्छे रिसोर्स जब अपने लिए जमा करेगा उतना ही अच्छा सीन हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। तो लेट्स सी कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है, ये तो टाइम ही बताने वाला है। और भी एक ऐसा सीन जो एक नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नज़र आएगा तो वो भी हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम यहाँ पर एक अच्छी प्रेजेंटेशन लेके अपने लिए एक अच्छी अच्छा पॉइंट्स कैरी करके अपनी आइटम अच्छी कैरी करके अपने एबिलिटीज़ को लेवल अप करते हुए तो कौन सी टीम नज़र आने वाली है। कुछ ही देर के अंदर हमें पता चलेगा। मिस्टीक हमें वंस अगेन ज्वाइन कर चुकी है। वेलकम बैक मिस्टीक। थैंक यू फॉर द वेलकम बैक। आज तो थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम इधर उधर हो रहे हैं, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है मैच देखते हुए, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी एक्साइटमेंट है फॉर दिस मैच जो पोटेंशियली इनके लिए लास्ट मैच हो सकता है। एंड आई थिंक एरो ये जानती है, बिकॉज एरो ऑलरेडी 2 स्किल्स स्कोर कर चुकी हैं। यहाँ पर देर नॉट गोइंग टू बी
जैसे कहते हैं नॉट गोना बी कमिंग स्लो। तो यहाँ पर एरो काफ़ी अपना एचपी का ख्याल रख रही है। दे आर नॉट इंडिविजुअली अभी तक इंगेजिंग, ऑल्दो हम देख सकते हैं कि वो अपनी टॉप लेन की तरफ उनके 3 प्लेयर्स रवाना हो चुके हैं, जहाँ पर रेड टीम का ऑलरेडी नेक्रो स्पोर्ट्स का एक प्लेयर है। एंड आई थिंक डार्क स्लेयर को डिफीट किया गया है फ्रॉम द साइड ऑफ टीम एरो, बिकॉज अब उनको भी पता है कि उन्होंने अपनी एबिलिटीज़ अपग्रेड करनी है। एंड द वे दैट दे आर गोइंग टू बी विनिंग दिस मैचेस, अगर तो उनका डैमेज, उनका अटैक मूवमेंट, उनकी अटैक स्पीड सारा उतना ही उस लेवल तक हो जितना टीम नेक्रो का है। बिकॉज टीम नेक्रो सिर्फ अपनी टीम वर्क पे नहीं वर्क करते, वो बार बार ये देखते हैं कि उनकी एबिलिटीज़ और आइटम्स और जिस तरह के वो इन चीज़ों को यूज़ करें टू विन द मैच, कि वो कितना आ सकते हैं। यहाँ पर टीम एरो एक गैंग के लिए गैंग अप होती है, गैंग किल किया जाता है। यहाँ पर 3 प्लेयर्स इकट्ठे टीम रेड टीम का एक प्लेयर टेक डाउन करते हैं। बहुत खूबसूरत एक तरह से उनकी वेल बैलेंस टीम है, जो यहाँ पर बार बार आई थिंक जो उनकी मार्क्समैन है वो काफ़ी डैमेज दे रही है मिनियंस को भी, बिकॉज वो अपनी कॉइन्स भी काफ़ी कलेक्ट कर रहे हैं। एंड वो मेक श्योर करें कि कहीं भी वो अलहदा कॉट अनअवेयर्स ना हो, बिकॉज जो रेड टीम है जब वो इनके ऊपर गैंग अप करती है और वो उनके 3 इकट्ठे प्लेयर्स आते हैं, तो इनको काफ़ी मुश्किलात फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी टीम एरो के 3 प्लेयर्स एक और रेड टीम का प्लेयर के अगेंस्ट देर गोइंग अप अगेंस्ट हिम एंड देर ट्राइंग टू टेक डाउन दानियाल बेग, जो एक वॉरियर हीरो का इस्तेमाल करते हुए ज़रा दूर रह रहे हैं। देर ट्राइंग नॉट टू इंगेज बिकॉज उनको ये पता है कि 1 against 3 is a hard it's a hard battle to win, and he's trying to make sure कि वो अपनी डिफेंस टावर के रेंज में, और पीछे से उनका एक और प्लेयर आता है जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मिंक्स एमएल। एंड बोथ ऑफ दीज, एंड यहाँ पर तीसरा प्लेयर भी आते हुए दिखाई दे रहा है। टीम नेक्रो स्पोर्ट्स के 3 प्लेयर्स आ चुके हैं। दे आर staying under the defense range of their tower, and that is how they've currently defeated double kill from the side of team Necro Esports, जो team Arrow के 2-3 players को इकट्ठे destroy कर चुके हैं। And that is what you should be careful of. Arena of Valor ऐसी गेम है जिधर 1 मिनट से 1 मिनट के अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ पर हमें देख सकते थे कि जो टीम एरो थी वो उनके 2 प्लेयर्स को टेक डाउन कर रही थी, बट उसी वक्त उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय की, वो अपने डिफेंस टावर की रेंज के अंडर आए एंड उन्होंने उनको डिफीट कर दिया, उनके 3 प्लेयर्स को टेक डाउन कर दिया ऑन द सेम लेवल। एंड यहाँ पर टीम एरो का प्लेयर स्माइलिंग की तरफ भागता हुआ जा रहा है, ही इज ट्राइंग टू टेक देम डाउन, बट एज यूजुअल वो अपने डिफेंस टावर की रेंज के अंदर आ गए एंड ही हैज सेफली कम इनटू द रेंज इन डिफेंस ऑफ हिज ओन प्लेस। सो डीमन, जैसे कि आप देख सकते हैं, आई थिंक टीम एरो का ऑलरेडी एक डिफेंस टावर डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड व्हाट वुड यू से अबाउट दिस प्रिडिक्टेबल टर्न ऑफ इवेंट्स वेयर टीम एरो इज सफरिंग अ बिट? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक टावर की बात की थी जब आपने की, बट अनदर टावर इज़ डाउन ऑफ एट मतलब ये चीज़ें ये काफ़ी मायने रखती हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए दिस टाइम, अगर सिचुएशन की अगर बात करूँ, यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी अच्छी बनते नजर आ रही है, दोनों टीमें काफ़ी अच्छा खेलते नजर आ रही है। इन दिस मैच एरो काफ़ी यहाँ पर भी प्रिपेयर हो गया, क्योंकि एरो की अगर बात की जाए, एरो इज़ एक्चुअली प्लेइंग वेल इन दिस मैच, बट लेट्स सी कि एरो और कितना अच्छा खेल के आगे की तरफ बढ़ती है। क्योंकि अगर बात की जाए, एरो 1 by 1 वंस अगेन अपने टावर को जो लूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि उनको थोड़ा सा यहाँ पर लो भी फील कराता है कि ये सीन अच्छा नहीं रहने वाला। बट वंस अगेन एबिलिटीज़ की बात की जाए, हीरोज़ अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको काफ़ी जल्दी से लेवल अप करते नजर आ रहे हैं। नो डाउट रे की बात की जाए, यहाँ पर बवसीर की बात की जाए, तो ये वो प्लेयर्स रहने वाले हैं जो कि अपनी एबिलिटीज़ को काफ़ी एक क्विकनेस की प्रॉपरली एक जोर दिया होता है उन्होंने कि क्या क्या एबिलिटीज़ और आइटम्स जो है वो हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर भी परचेज़ करके यहाँ पर भी अपने लिए बना के रखनी है। और यहाँ पर अगर बात की जाए, नो डाउट ये चीज़ें आइटम्स जो हैं आपके अटैक को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, आपकी डिफेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, आपकी मूवमेंट को काफ़ी फास्ट कर देती हैं। ये चीज़ें काफ़ी मैटर कर रही होती हैं। स्पेशली आइटम्स की बात की जाए तो आइटम हर हीरो की एक कम्बो रहने वाली है, क्योंकि अगर बात की जाए आइटम्स को अरेंज करना इन ए प्रॉपर लाइन, ये भी काफ़ी एक ज़बरदस्त सीन रहता है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि यार कौन सी एबिलिटी, कौन सी जो आइटम है वो हम एक अलाइन करें तो यहाँ पर एक अच्छी पावर हमारे लिए, एक मेंटेनेबल पावर यहाँ पे बनते नजर आएगी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, नो डाउट यहाँ पर भी दोनों टीमें ये चीज़ें समझती हैं, अपनी एबिलिटीज़ को यहाँ पर प्रॉपरली यूज़ करते नजर आ रही हैं। एंड स्पेशली भी एक आइटम्स की अगर बात की जाए मिस्टी,
भाई सारे के सारे प्लेयर्स अपनी एबिलिटीज़ को एंड अपनी आइटम्स को एक लाइन में अरेंज करते नजर आ रहे हैं, विच इज़ ए गुड थिंग। यहाँ पर वन बाय वन अगर हर प्लेयर की बात की जाए, हर प्लेयर की मैं बात करूँ, यहाँ पर सारे के सारे प्लेयर्स एक वेल नोन, ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ तक पहुँचे हैं, इस लेवल तक पहुँचे हैं, तो हर प्लेयर यहाँ पर अपनी एक वैल्यू रखता है, हर प्लेयर यहाँ पर एक हर इस गेम के लिए काफ़ी होगा ना, एक अंडरस्टैंडेबल इस गेम रहने वाली उस प्लेयर के लिए कि वो जानता है कि आइटम कितनी ज़रूरी रहने वाले हैं, हमारी एबिलिटी के लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, एरो को बिल्कुल मौका नहीं दिया जा रहा कि वो अपने लेवल को अप कर सके। जैसे ही वो आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं, टावर को डाउन करना चाह रहे होते हैं, तो मुश्किलात बनते नजर आ रही हैं। 5 टावर्स डाउन कर चुके हैं। जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी वो एक काफ़ी लीड पे आ चुकी है टीम नेक्रो ई स्पोर्ट्स। एंड जो आपने मोर इम्पॉर्टेंटली बात की आइटम्स की, ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्सेनल बिल्ड कर लिया अपने वेपन्स का, जिधर हमें एस्ट्रल स्पेयर, ब्लिट्ज ब्लेड, बो ऑफ इटर्निटी, ऑल ऑफ दीज आइटम्स जो काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, काफ़ी डेंजरस रहते हैं फॉर द एनिमी टीम, जिधर इनकी एबिलिटीज़ काफ़ी बिल्डअप हो रही हैं। तो एंड आई थिंक डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वाओ, दैट वाज एक्चुअली अ वेरी क्विक मैच। काफ़ी ही जल्दी टीम नेक्रो ने बहुत ही हमें एक दम दिखाया कि वो अनप्रिडिक्टेबल आइटम्स नहीं, सिर्फ एक अनप्रिडिक्टेबल गेम प्ले भी लाती हैं, जिधर Exactly. 3 इन अ रो काफ़ी खूबसूरत एंड डोमिनेटिव गेम प्ले उन्होंने दिखाया, जिधर दे काइंड ऑफ दे टोल्ड टीम एरो, you're good, but we're better, and that's how they're going to send you back to the lobby. So team Necro Exactly. Esports is a name, I think, to remember, Demon, no? एग्जैक्टली फाइनल्स तक पहुंच गए हैं लड़के। नो डाउट अगर बात की जाए, टीम एरो को एक चांस भी नहीं दिया कि वो थोड़ा सा और स्टैंड अप कर सके। मतलब कि आप ये चीज़ देखने वाली होती है, क्योंकि अगर बात की जाए एक सामने आपकी एक अच्छी एक तगड़ी टीम, अच्छे प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले हैं, उस प्लेयर को यहाँ पर टेक डाउन करना इज़ लाइक अ बिग थिंग। बट मेरे ख्याल से मिस्टेक हम एक छोटे से ब्रेक के ऊपर वंस अगेन जाते हैं। जस्ट ग्रैब योर पॉपकॉर्न, जो भी हमारी ऑडियंस रहने वाली है, ग्रैब योर पॉपकॉर्न, जो भी आप स्ट्रीम देखते हुए खाना पसंद करते हैं, लेके आइए, हम ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं।
In a time of legend, the twin dragons of wisdom and life guarded the rich and fertile East. Bountiful as it was, it begat the desire of the ravenous Helios Empire that laid onslaught upon this land. The dragons prevailed, and the Empire's forces were cast out in defeat. But a priest of Helios left a terrible curse of endless sand on the land. Its people were left with nothing but desolation and hunger. In a noble sacrifice, one of the dragons gave its body to restore the land, turning into the mountains that climbed and the rivers that flowed. The other dragon gathered all its might to mold an impregnable barrier, then vanished without a trace. And while the land was thus restored to its former glory, the benevolent guardians were no more. Their memory, however, stayed immortal in the name of this land, Dragon Kingdom. The ages passed. Stories of the dragons turned into legends, but the people carried on in their worship. Each year, a festival known as the Day of Blessings was held. Tributes were made to honor the dragons that gave life to the kingdom. Their favor promised a gentle sky and a rich harvest. But during this year's festivities, something was amiss. Across the border, Helios loomed with its relentless gaze. And within, the imperial family was in bitter strife. Princess Yue and Prince Ji each saw the Day of Blessings as an opportune time to claim the throne. They each called to arms and raised their troops. And so once more, the stage was set for battle to shape the fate of the Dragon Kingdom. Hey guys, the hero we are introducing today is Wukong. Wukong is a nimble warrior who is capable of dealing massive damage. With his weapon at hand, Wukong can hardly fall in battles. Passive, God of War. Each time Wukong uses a skill, his next normal attack can jump onto the target, dealing additional physical damage. First skill, Shadow Clone. Wukong creates a clone of himself, which deals damage to surrounding enemies when it vanishes. The skill can be casted on motion and boosts Wukong movement speed for 1 second. Combined with other skills, Wukong can always outplay the enemies in battles. Second skill, Great Sage. Wukong swiftly tumbles to the target area. The skill can also increase Wukong's physical and magical defense. With Great Sage, Wukong can easily disengage from battles when he's low on health. Ultimate Monkey Business. Wukong unleashes his inner rage, causing damage and stunning nearby enemies. Monkey Business is an AoE crowd control spell, which Wukong often uses to wipe out the enemy team with the help of his allies. Wukong is an expert in assassinations. He can use Shadow Clone to approach the prey, then burst the target down using Monkey Business and Shadow Clone. Wukong can also use Shadow Clone and Great Sage to trick the enemy team. In battles, Wukong can use Great Sage first to jump into the enemy team, followed up with the other skills to clean up the battlefield. Overall, Wukong is a nimble warrior who can deal massive burst damage, granting his team to an easy victory. Thanks for watching today's episode on Wukong.
वेलकम बैक गाइस वंस अगेन हम आ चुके हैं वापस आपकी खिदमत में हाजिर। व्हाट ए गेम प्ले भी जो हमें अभी कुछ ही देर पहले देखा है। एरो ई स्पोर्ट्स लूज करके चली गई है, बट लेट्स सी कि कल का दिन जो फाइनल में रहने वाला है उसमें इस ग्रुप में से कौन सी टीम जाने वाली है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मैच रहने वाला है। इसमें से भी सिर्फ एक ही टीम सेलेक्ट होगी कल के दिन के लिए, और देखते हैं कि या तो वो एपेक्स गोल्ड रहने वाली या तो टीम भाई बड़ा हैवी नाम रहने वाला है इसका, वलहाला। मतलब कि भी एक ऐसा नाम मतलब कि भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता बता कि यार कि इस तरह का भी कोई टीम नाम रख सकती है। काफ़ी क्रिएटिव नाम रख लिया इन्होंने, बट लेट्स सी कि इन दोनों में टीमों में से कौन जीतने वाला है आज के दिन के अंदर। बट मेरे साथ राइट नाउ जो कास्टर मेरे साथ रहने वाली है, दिस इज एक्चुअली मिस्टीक, एक वेरी टैलेंटेड कास्टर फ्रॉम पाकिस्तान साइड। और बी वेलकम बैक मिस्टीक। एक ज़बरदस्त किस्म का गेम प्ले एक दफ़ा फिर आ चुके हैं, दो बड़ी बड़ी टीमें सेमीफाइनल के अंदर। या थैंक यू डीमन, एंड डेफिनेटली एक काफ़ी ही बड़ा गेम प्ले नज़र आने वाला है, स्पेशली जहाँ आपने बात की फॉर द नेम ऑफ टीम वैल्हाला। मैं भी द मिनट दैट आई सॉ द स्केड्यूल फॉर द सेमीफाइनल्स, मुझे इनकी नाम से बहुत ही I really liked their name because not only is it so creative, but just the meaning it's really I think relevant here, because Valhalla is actually a word from Norse mythology, and I'm sort of a freak on mythology. So Nordic religion mein Valhalla is basically heaven. It is the hall of the warriors जो when they are slain, तो जब वो जब वो बैटल में मारे जाते हैं, तो जो हाईएस्ट लेवल वो अचीव कर सकते हैं उनके लिए जो हेवन है, which is Valhalla, hall of the slain. So I think काफ़ी हैवी तरह का नाम, काफ़ी रेलेवेंट तरह का नाम, एंड स्पेशली इन अ मोबाइल बैटल ग्राउंड गेम उन्होंने एक बहुत ही ऐसा नाम रखा है जिससे आप थोड़ा सा यू सीन यू गो लाइक you get shivers. So not only that, I'm really excited to see their gameplay because हमें पता है कि ये दो up and coming teams है with exceptional talent and exceptional teamwork as well, because जो इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हैं, तो आगे तो हम देखना चाहते हैं कि ये बेस्ट ऑफ 5 में कैसे फेयर करते हैं, और क्या ये नेक्रो स्पोर्ट्स की तरह बिल्कुल डोमिनेट करेंगे या टीम एरो की तरह थोड़ा सा स्लो गेम प्ले दिखाएंगे. एंड एज वी सी वी हैव स्टार्टेड द गेम एंड काफ़ी वेल बैलेंस टीम्स नज़र आ रही हैं. वी सी कि टीम द ब्लू टीम इज़ रशिंग टूवर्ड्स, आई थिंक दैट्स टीम Apex, not 100% sure, but they're rushing towards the bot lane where they're going to I think try and get some abilities, but I'm not 100% sure. एक उनका जो हीरो है वो बिल्कुल टॉप लेन में एक रेड टीम के प्लेयर की तरफ इंगेज करने जा रहा है. यहाँ पर एक इंगेजमेंट दिखाई देती है जिधर और से जो वॉरियर हीरो है उनके साथ इंगेजमेंट ली जा रही है. वी हैव अ 2 versus 1 सिचुएशन, बट और से उन्होंने जो मुएह वाले प्लेयर हैं वो काफ़ी एक अक्लमंद डिसीजन कर रहे हैं कि वो अपनी डिफेंस टावर की रेंज में रह रहे हैं, और उनका साथ में एक और प्लेयर 10th डेंटिस्ट भी आता है फॉर बैकअप एंड सपोर्ट. और यहाँ पर द टेबल्स टर्न ऑन द ब्लू टीम, और जहाँ पर उनकी काफ़ी लो लेवल और HP हो रही है, बट वो क्विकली काफ़ी अक्लमंद डिसीजन लेके देर गोइंग बैक इन टू द रेंज ऑफ द डिफेंस टावर. आई थिंक यहाँ पर रिकॉल करेंगे, वापस बेस जाएंगे टू गेट द HP. और उसके अलावा ही हम देख रहे हैं कि जो रेड प्लेयर्स हैं वो काफ़ी डिस्पर्स्ड हैं, मिड लेन में भी हैं और बॉट लेन में भी हैं, और एक उनका प्लेयर शायद एबिलिटीज़ गैदर करने के लिए डार्क स्लेयर लेन की तरफ नज़र आता है. यहाँ पर काफ़ी ही देख रहे हैं कि अभी तक वी हैवंट सीन एनी kills and not any abilities, but both of the teams are showing patience and a bit of strategy. एग्जैक्टली. एंड वलहाला थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फास्ट नज़र आ रही है, क्योंकि अगर बात की जाए वलहाला की, तो वलहाला यहाँ पर काफ़ी जल्दी रिसोर्स जमा करते नजर आ रही है, जबकि अगर बात की जाए दोनों एक बैलेंस वे में चलते नजर आ रही हैं. बिल्कुल एक छोटा सा माइनस भी डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच के अंदर, बट अगर जो टीम यहाँ पर रिसोर्स इकट्ठे करने में एक जल्दी करती है, लाइक अपने एबिलिटीज़ को यहाँ पर भी प्लस अप करती है, तो वही सीन बनेगा. यहाँ पर आइटम्स एक प्रॉपरली अरेंज करना, तो ये भी काफ़ी एक मैटर टाइम रहेगा, क्योंकि हर प्लेयर यहाँ पर सेम अगर बात कीजिए, यहाँ पर प्लेयर्स ये सब कुछ जानते हैं कि हीरोज़ वर्क कैसे करते हैं, यहाँ पर आइटम्स कैसे काम करती हैं, एंड यहाँ पर भी एबिलिटीज़ हर हीरो की, हर प्लेयर को यहाँ पर अंदाज़ा है कि भी कि कौन सी टीम या मतलब कि भी ये पहले डिसीजन लेती है कि अटैक करे टावर्स के ऊपर, यहाँ पर टावर को डिस्ट्रॉय करे. यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा, बट राइट नाउ एबिलिटीज़ के मामले में टीमें दोनों काफ़ी अच्छा खेलते नजर आ रही है. लुक एट दिस, मतलब कि भी एक वे में 4-4-4 एपिक्स की अगर बात की जाए, एपिक्स इज लाइक लिटिल बिट फास्टर देन दी वलहाला. वलहाला के बॉयज़ भी यहाँ पर अगर बात की जाए वो भी अभी 5th एबिलिटी की ओर पहुँच चुके हैं, बट अगर बात की जाए अरेंजमेंट की, तो अब एपिक्स के बॉयज़ भी सेम टू सेम चलते हुए नजर आ रहे हैं.
बट वन बाय वन अगर बात की दूसरे साइड पे भी यहाँ पे मॉन्स्टर्स को भी यहाँ पे भी डिस्ट्रॉय करने की प्रॉपर कोशिश की जा रही है। ये 2 प्लेयर्स वल्हाला के यहाँ पर किल कर दिए गए हैं एंड डबल किल यहाँ पे सिक्योर कर लिए गए। मॉन्स्टर्स को भी यहाँ पे भी डिस्ट्रॉय करने की प्रॉपर कोशिश की जा रही है। बट दूसरे साइड पे अगर बात कीजिए यहाँ पर भी एबिलिटीज वल्हाला इज इक्विक फास्टर देन द एपेक्स बॉयज। यहाँ पर एपेक्स के बॉयज भी यहाँ पर प्रॉपरली तैयार होके आए इस मैच के अंदर। और अगर बात की जाए एरो की और बाकी जो दूसरी टीम रहने वाली थी उसकी, तो यहाँ पर अगर सिचुएशन की बात कीजिए तो मेरे ख्याल से इस टीम ने प्रॉपर उनका मैच स्टेडी किया कि वो टीम यहाँ पर किस तरह खेलते नजर आ रही थी। यहाँ पर भी एबिलिटीज़ को यहाँ पर काफ़ी प्योरिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पर भी एक रिसोर्स को जमा करने का काफ़ी एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ पर रिसोर्स को भी एक लेवल के साथ यहाँ पर भी मेंटेन किया जाए मिस्टी। जी बिल्कुल, रिसोर्स गेन करें, आइटम्स भी पिकअप किए जा रही हैं, ब्लेड ऑफ इटर्निटी हमें नज़र आती हुई है, ग्लव्स हैं, शॉर्ट स्वॉर्ड है जिससे अपना ये डैमेज इंक्रीज़ करने, अटैक डैमेज, बट ऑल्सो कि ये माइट गॉलम के साथ यहाँ पर एक फ़ाइट इंगेज की जा रही है एम हुमाम मलिक की तरफ से, जो इसका जो HP पॉइंट्स होते हैं एज वेल एज अटैक पॉइंट्स वो भी गेन किए जा रहे हैं। एंड ही इज़ राइट नाउ चेजिंग प्लेयर ऑफ द रेड टीम एंड यहाँ पर भी फ़ाइट इंगेज की जा रही है। बट वो यहाँ पर एक अक्लमंद डिसीजन ये ले रहे हैं कि उनके 3 प्लेयर्स करीब रह रहे हैं ताकि वो एक गैंग किल में अपने 3 प्लेयर्स लूज ना करें। एंड ऑल्सो वी कैन सी कि 4 वर्सेस 7 किल्स है हमारे पास, तो काफ़ी अभी तक एक अनप्रिडिक्टेबली जा रहा है, नॉट काफ़ी एक दोनों की तरफ से नहीं अभी इतना नज़र आ रहा कि कौन जीतेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी दोनों की तरफ से एम्प्लॉय की जा रही है। अबिस्मल ड्रैगन को डिफीट किया गया है, टीम वल्हाला की तरफ से एबिलिटीज़ गैदर हो रही हैं, दो मॉन्स्टर्स को डिफीट करके उन्होंने अपने स्किल्स भी अपग्रेड करी हैं। टीम लेवल ऑलमोस्ट 6 और 5 पे जा रहे हैं इस वक्त। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने अपनी काफ़ी आइटम्स बिल्ड कर लिए हैं। Because I think the more monsters that they're killing and the more items that they're gaining, so they're also leveling up their abilities. उनका जो ultimate damage skill होगा वो भी काफ़ी इस वक्त high level पे पहुंच चुका होगा। and वो काफ़ी अपने अगर आप notice करें मैप में तो bot lane में ही travel कर रहे हैं and इतना दूर नहीं जा रहे अपने defense towers की तरफ से, because they know that the more they go out of range the more they're going to be in danger of getting dominated by the other team. and also कि Apex Gold काफ़ी अच्छी strategy employ कर रही है, वो 2 versus 2 ये engage कर रहे हैं, but वो ज़्यादा दूर वो भी अपनी डिफेंस टावर्स की रेंज से नहीं जा रहे, बिकॉज उनको पता है जिस तरह अभी वो गए हैं थोड़ा सा दे वेंट इनटू द रेंज ऑफ द रेड डिफेंस टावर एंड उनको काफ़ी डैमेज डील हुआ है, बट अब वो काफ़ी पीछे आ रहे हैं। HP एंड मैना रीगन उनकी लूज हुई है एंड दे आर टेकिंग अ 1v फाइट एपेक्स Y2J वर्सेस आई थिंक डेज। बट यहाँ पर टीम रेड का प्लेयर एक आता है वल्हाला का बैकअप करने और इमीडिएटली वापस जाता है वो अपनी HP रिगेन करने के लिए। एग्जैक्टली यहाँ पर भी जैसा कि HP की बात कीजिए यहाँ पर भी अपनी रिस्टोर करेगा, थोड़ी देर बाद वापस से आएगा, क्योंकि ये चीज़ सॉरी यहाँ पर भी चीज़ काफ़ी मैटर करती है। क्योंकि अगर बात कीजिए यहाँ पर थोड़ी सी HP रह जाती है तो प्लेयर्स अपने आप को रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल का थोड़ा सा यहाँ पर टाइम पीरियड लेता है वो, बट अगर बात की जाए रिकॉल की, जहाँ पर भी एक ये डिसीजन लेना अभी काफ़ी मुश्किल बन जाता है। क्योंकि बात की जाए यहाँ पर भी प्रॉपरली हर प्लेयर की अगर बात की जाए यहाँ पर भी प्लेयर्स जो है काफ़ी सोच समझ के यहाँ पर भी हर चीज़ को हैंडल करना चाह रहे हैं। बट प्लेयर्स यहाँ पर किल्स तो कर रहे हैं, लाइक यू कैन सी दिस वल्हाला एंड ऑफ कोर्स एपेक्स गोल्ड की अगर आप किल्स देखें तो यहाँ पे किल्स यहाँ पर मैटर नहीं कर रही होती। मैटर यहाँ पर ये कर रहा होता है गाइज कि टावर यहाँ पर सबसे पहले कौन डिस्ट्रॉय करेगा। मेन टावर जिसने डिस्ट्रॉय कर लिया वो टीम जीत जाती है। अगर यहाँ पर हमारी कुछ ऑडियंस यहाँ पर भी ये चीज़ सोच रही है कि यहाँ पर ये गेम कैसे वर्क करती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीरोज होते हैं, लाइक वी हैव टैंक्स, वी हैव असैसिन्स, द मार्क्समैन, स्पोर्टर, मतलब हर कैटेगरी के हीरोज़ होंगे। और वो अब स्पोर्टर की कैटेगरी के अंदर स्पोर्टर्स होंगे सारे जो यहाँ पर टीम को सपोर्ट देते होंगे, मार्क्समैन, देन असैसिन, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर भी हीरोज़ आप अपनी पूरे 5 प्लेयर्स के मुताबिक मतलब कि सारी कैटेगरी से कुछ ना कुछ यहाँ पर उठाने हैं, प्लेयर्स उठाने हैं, और उसके बाद इस मैदान जंग के अंदर उतर जाना है। और इस मैदान जंग के अंदर जैसे ही आप अपने कदम जमाओगे तो आपको यहाँ पर अपने कदम जमाने कैसे हैं, अपने एबिलिटीज़ को लेवल अप करना है, अपने आइटम्स यहाँ पर भी प्लस करने हैं। वो कैसे करेंगे? मॉन्स्टर्स को यहाँ पे किल करके, प्लेयर्स को यहाँ पर डैमेज दे के, यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर रिसोर्स मिलेगा। उस रिसोर्स को अपनी एबिलिटीज़ के अंदर अपने लेवल अप को, एबिलिटीज़ को लेवल अप करने में वो हेल्प अप करेगी। आइटम्स को जमा करने के लिए यहाँ पर आपको हेल्प अप करेगी। तो ये चीज़ें आपकी गेम इस तरह वर्कअप करती है इस पूरे सिनेरियो की अगर बात की जाए। बट वंस अगेन अगर बात की जाए टावर्स की, तो यहाँ पर भी वल्हाला अपने की तरफ से अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से 2 टावर डिस्ट्रॉय कर दी गई मिस्ट्री।
जी बिल्कुल, 2 टावर्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं और एटलीस्ट आई थिंक इन्होंने 3 मॉन्स्टर्स को डिफीट किया है, जिसकी वजह से उनकी आइटम्स और एबिलिटीज़ काफ़ी लेवल अप हो चुकी हैं। ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हैं कि किल्स में भी डिफरेंस इसी चीज़ से आता है और ये हमने टीम एरो की तरफ से देखा कि वेयर दे हैव 0 मॉन्स्टर डिफीट्स, वेयर दे हैव 0 किल्स फॉर एबिलिटीज़, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं बिकॉज उनका डैमेज उतना ज़्यादा नहीं होगा, उनकी हीलिंग पावर्स इतनी नहीं होंगी और ना ही उनका जो मूवमेंट स्पीड है वो होगी। तो यहाँ पर ऑल्दो सक्सीड किया गया है टीम एपेक्स गोल्ड की तरफ से, उन्होंने एक टावर डिस्ट्रॉय कर दिया है। फाइनली दे हैव गैंग्ड अप एंड दे हैव टेकन डाउन। जी, एक उन्होंने कहा कि अब तो हम लेके दिखाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो भी काफ़ी अपने प्लेयर्स को इंगेज रख रहे हैं। ऑल्दो टीम वैल्हाला जिस गैंग किल पे वो जा रहे थे, उनकी तीनों प्लेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा HP लूज़ किया एंड आई थिंक दे हैव बिल्ड अप ऑन देयर HP पावर बिकॉज ऑल्दो उनकी HP लूज हुई है, दे डिडंट गेट एक्सिक्यूटेड, उनको फाइनल ब्लो डिलीवर नहीं हुई और उनकी किल्स अभी भी 6 वर्सेस 14 है। एंड जैसे आपने बात की थी कि सपोर्ट हीरोज एंड इस तरफ डिफरेंट हीरोज़ की क्या एबिलिटीज़ होती है, मैं यही बात करना यहाँ पे थोड़ा सा दोहराना चाहूँगी कि जो टीम वैल्हाला है उन्होंने अपनी जो मार्क्समैन और अपना मेज है, स्पेशली जो उनकी आई थिंक एलिस मार्क्समैन है, वो उन्होंने काफ़ी करीब रखी हुई है अपने वॉरियर हीरो के साथ। तो जहाँ पर उनका वॉरियर वो फाइट इंगेज कर रहा है और आगे जा रहा है, पीछे से उसको एक काफ़ी डिफेंस की रेंज और स्पेल्स की रेंज मिल रही है, जिधर से उनका मार्क्समैन एरो इंगेज करता जा रहा है और उसके लिए आगे वाला रास्ता क्लियर रख रहा है। और ये ऐसी स्ट्रैटेजी है कि आई थिंक इट इज़ फेल प्रूफ, इट इज़ समथिंग दैट विल सक्सीड इन अगेन एंड अगेन, जो हमने टीम नेक्रो की तरफ से भी देखा और इधर भी देखते हैं कि वही स्ट्रैटेजी इज़ लीडिंग for Valhalla to get 15 kills, whereas team Apex is sort of on the lower side with only 7 kills. And I think Valhalla again and again, जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने अब 3 towers destroy कर चुके हैं और वो ड्रैगन को भी डिफीट कर चुके हैं। एंड द थिंग अबाउट द बिस्मल ड्रैगन इज, अगर आपको रीना वैलर का एक्सपीरियंस है, सो यू नो दैट वंस यू डिफीट दिस ड्रैगन पास द 5 minutes of the game, you get exceedingly more damage points. एंड जब आप विद इन द फर्स्ट 5 seconds आप अगली टीम को इंगेज करते हैं तो आपके डैमेज पॉइंट्स काफ़ी रैकअप होते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ आप देख रहे हैं, अगेन वो जाके अब डार्क स्लेयर को इंगेज करें, डार्क स्लेयर की लेन में उनके 500 प्लेयर्स उसको डिफीट करके पॉइंट्स इंक्रीज करें, जहाँ पर उनकी एबिलिटीज़ कितनी लेवल अप हो रही हैं ये आप देख सकते हैं। उनके आइटम्स भी उसी लिहाज से बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह अब यहाँ पर 3 प्लेयर्स इंगेज करने आए हैं टीम एपेक्स गोल्ड की तरफ से भी, और यहाँ पर एक ब्लड बाथ हो रहा है, एक रैम्पेज हो रही है, एक तरह का बिल्कुल खूनोख्वार बैटल ग्राउंड बना हुआ है, जिधर दोनों टीम्स की तरफ से किल्स लिए जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली एक्सीड क्योंकि एबिलिटीज़ करती हैं यहाँ पर टीम वैल्हाला की, उनके 17 किल्स यहाँ पर वो गेन कर चुके हैं, काफ़ी स्ट्रेटेजिक एंड टीम वर्क एम्प्लॉय करके डबल किल पे डबल किल वो लिए जा रहे हैं। एग्जैक्टली, डबल किल पे डबल किल लिए जा रहे हैं। बट लेट्स सी क्या सीन रहने वाला है कि एपेक्स गोल्ड की अगर बात कीजिए तो एपेक्स गोल्ड यहाँ पर थोड़ा सा लो डाउन नज़र आ रही है, क्योंकि अगर बात की जिस तरह की एबिलिटीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग करते हुए टीम में रहने वाली है वल्हाला नो डाउट। लुक एट द आइटम्स राइट नाउ, आइटम्स पे आइटम्स अपने सेट करते जा रहे हैं, क्योंकि यही टाइम रहेगा कि अपने आइटम्स को और स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आए। एंड नो डाउट उन्होंने अपने आइटम्स के ऊपर काफ़ी वर्क किया हुआ है, उन्होंने मॉन्स्टर्स को किल कर करके जो रिसोर्स वो जमा कर रहे हैं उनको प्रॉपर एक गेम की नॉलेज रहने वाली है कि यार कि क्या सीन रहने वाला है, टीम्स हम किस तरह हर प्लेयर अपनी एबिलिटीज़ को प्रॉपरली यूज़ करते हुए नजर आ रहा है। एंड स्टिल मेरे ख्याल से वल्हाला इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ जो कि इस कंडीशन के अंदर प्ले करते नजर आ रही है। बट अगर बात की जाए एपेक्स गोल्ड, बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि यार कि वो टीम कोई नॉर्मल रहने वाली, टक्कर का मुकाबला एक जिसे कहते हैं आप, वो देखने को मिल रहा है दोनों की साइड से। एक साइड से 2 टावर डिस्ट्रॉय कर दिए गए एपेक्स गोल्ड की तरफ से, एंड वल्हाला की साइड से 3 टावर डिस्ट्रॉय किए गए। तो अगर बात की जाए वल्हाला की, नो डाउट उसको थोड़ी लीड पे रहने वाली टावर्स के मामले में, बट एपेक्स इज प्लेइंग वेल। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि एपेक्स के बॉयज जो है यहाँ पर भी बिल्कुल नॉर्मल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बट एपेक्स इज प्लेइंग एक्चुअली वेल, दिस टीम इज प्लेइंग वेल। और वल्हाला की बात करूँ, अगर बात की जाए, लुक एट दिस, 3 की 3 प्लेयर्स एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक साथ तो कहते हैं ना प्रॉपरली स्काउट करके यहाँ पे किस साइड पे प्ले रहने वाला है। यहाँ पर भी रिसोर्स भी इकट्ठे मिलके इन्होंने जमा किए हैं, इकट्ठे चार्ज करते हैं किसी भी ड्रैगन के ऊपर अगर इन्होंने चार्ज करना होता है। एंड नाउ लुक एट दिस वंस अगेन, यहाँ पर अगर बात कीजिए कंडीशंस की, यहाँ पर भी टावर के पास पहुंच चुके हैं एंड प्लेयर ऑलरेडी वहाँ पर बैठा हुआ है सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर भी कॉल दे दी की होगी उसने कि यहाँ पर क्या सीन होने वाला, बट एक किल, डबल किल, ओह माय गॉड। यहाँ पर जिस तरह किल्स निकाली जा रही है, दिस इज एक्चुअली अमेजिंग, किल्स पे किल्स। यहाँ पर भी टीम को स्लो डाउन किया जा रहा है। एपेक्स की टीम वंस अगेन एक और टावर लूज करते हुए नजर आएगी, जो कि ये रहने वाला है, एंड दैट्स इट।
एक और टावर डाउन होगा। बट अगर बात की जाए एपिक्स की, एपिक्स भी 4 टावर्स यहाँ पर लेके जा चुका है। एंड सेम अगर बात की जाए राइट नाउ मुकाबला जो मैंने कहा था टक्कर का, वो अभी कुछ ही देर पहले हमें 4x4 टावर्स यहाँ पर डाउन नजर आ रहे थे। बट नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर वलहाला के बॉयज यहाँ पर 5 टावर्स दे चुके हैं, बट मेन टावर्स तक भी पहुंच चुके हैं। लुक एट दिस, वलहाला के बॉयज यहाँ पर मेन टावर तक पहुंचे, काफी टावर को डैमेज कर चुके हैं। एंड हियर यू गो, वलहाला इज ए विनर। यहाँ पर भी एक पहला मैच भी स्टार्टअप मैच विन करना इज लाइक अ बिग थिंग। जी बिल्कुल, and that was quite a balanced gameplay, very good fight put up by Apex Legends, and but you know Team Valhalla quite dominated that, and we will just be showing you the results कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि the damage dealt by Team Valhalla is just incredible, and I think most of the damage was ramped up by Dom AK, and काफी अच्छा although a good fight put up by Apex Gold. I really liked that strategy, but the Team Valhalla in the end they proved too much for the other team, and इसी के बाद हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, and we'll see you back, so stay tuned for the next match.
वेलकम बैक गाइस, एक दफा फिर आ चुके हैं मैं और मिस्टेक आपकी खिदमत में हाजिर। कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाएगा, लॉबी बन चुकी है, सारे के सारे प्लेयर्स ज्वाइन कर चुके हैं एंड कुछ ही देर के बाद देखते हैं कि क्या सीन बनता है क्या सीन नहीं बनता। मिस्टेक, वेलकम बैक। Thank you, Demon, and it seems for the fifth time you're just welcoming me. But thank you, yeah, for bringing us back to the game. And अभी जैसे हमने देखा कि Valhalla नाम ही इतना मजे का था एंड गेम प्ले तो उससे भी ज़्यादा मजे का था। मुझे तो आई रियली एंजॉयड वाचिंग द वे दैट दे रैंक्ड अप देयर गैंग किल्स और जिस तरह उन्होंने वो मॉन्स्टर्स को टेक ऑन किया, अबिस्मल ड्रैगन को एक दफ़ा डिफीट किया, आई थिंक एक्चुअली ट्वाइस, एंड देन दे टुक डाउन द डार्क स्लेयर एंड द माइट गोलम एज वेल। तो काफ़ी उन्होंने पॉइंट्स रैंक अप किए, अपनी एबिलिटीज़ रैंक अप की, skills rank up kiye, but most importantly they stayed within range of their teammates. They stayed behind the shooting range of their marksmen and their mages, and they also kind of defended their defense towers as well. So जब तक वो अपनी defense towers की range में थे, although Apex Gold put up a great fight, they took down 4 of their towers. They also had a very well-rounded balanced team, but I think Valhalla actually, pulled through and showed what real talent and experience, and they shown kind of, they took that ordinary gameplay to the extraordinary level, and that is why, itna asani se they were able to dominate the other team. इस मैच की तरफ जाते हैं, and I am waiting to see for the second match if Apex Gold is going to come back with a bang, or if they're going to suffer at the hands of Team Valhalla again, Demon. एग्जैक्टली यहाँ पर Valhalla नो डाउट एक अच्छी गेम प्ले करते रहे, बट मिस्टेक बात करें एपेक्स गोल्ड की तो नो डाउट एपेक्स गोल्ड की तरफ से भी एक अच्छा चार्ज देखने को मिला था रिसोर्स के मामले में, आइटम्स के मामले में, या तो फिर अगर बात की जाए एबिलिटीज़ के मामले में, वो टाइम टू टाइम अपने प्लेयर्स के एबिलिटीज़ को लेवल अप करते नजर आ रहे थे। तो यही टाइम था कि वो यहाँ पर चार्ज भी करना स्टार्ट करते, बट ये चीज़ वलहला ने काफ़ी यहाँ पर भी मेंटेन की है कि वो यहाँ पर उन्होंने टावर्स को डिस्ट्रॉय करना भी स्टार्ट कर दिया, साथ साथ एंड प्लेयर्स को भी एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उन्होंने 2 से 3 प्लेयर्स को यहाँ पर भी एलिमिनेट किया, देन वो जल्दी से जाके जितनी देर वो रिवाइव होकर दोबारा से स्पॉन होते हैं, तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने जल्दी से जाके मेन टावर के ऊपर अटैक कर दिया, और वही टाइम रहता था जिस तरह उन्होंने अटैक किया और विन किया। पहला मैच उन्होंने काफ़ी मज़े का विन किया, बट लेट्स सी नेक्स्ट मैच आ चुका है। इस मैच के अंदर अगर वल्हला जीत जाती है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चांस रहने वाला होगा कि अगर वो तीसरा मैच भी जीत जाती है तो इट्स सिंपली विन विनिंग फ्लैग इन हैंड ऑफ वल्हला। यहाँ पर एक विनिंग फ्लैग वो अपने अपने हाथ में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 मैचेस जिसने भी पहले विन कर लिए, ऑलमोस्ट सीधा विनिंग फ्लैग उसके हाथ में चला जाएगा। बट थोड़ा सा एपेक्स गोल्ड को सोच समझ के इस मैच के अंदर उतरना पड़ेगा, इस मैदान जंग के ऊपर प्रॉपर्ली प्रिपेयर होकर उतरना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर अब उनको पता चल गया होगा कि जिस तरह वल्हला की गेम प्ले रहने वाली है, जिस तरह वो ड्रैगन्स को 1 बाय 1 टेक डाउन कर रहे थे, रिसोर्स को जमा कर रहे थे, ये काफ़ी पॉइंट आउट वो चीज़ें देखने वाली होती कि यहाँ पर भी वो चीज़ें देखनी पड़ेगी टीम को कि यहाँ पर सामने हमारी एनिमी किस प्लान के साथ इस मैदान जंग के ऊपर उतरते नजर आ रही है। जी बिल्कुल डीमन, एंड आई थिंक रेड टीम की तरफ से मैच पॉज किया गया है for some reason, not sure what that is, but I would just like to reflect back on the choice of heroes by both teams. I am really excited to see what Natalia, the mage that they have chosen, I think by Team Valhalla, what they are going to be bringing to the match, because Natalia is one of the the pioneer of the heroes, I think, because जो उसके attack skills हैं, जो उसके पास ultimate उसका skill है, I think we have a slowdown, we have a buff, we have an area damage, not 100% sure, but इसके काफ़ी she releases this beam of energy that is actually very harmful to the other team. But also on the other hand, जो Apex Gold ने चला है Tel Anas, which is actually a marksman hero, उसकी range काफ़ी ज़्यादा, उसका attack damage काफ़ी ज़्यादा है, और उसकी constitution although थोड़ी सी low side पे, but she is also very well rounded hero. तो उन्होंने काफ़ी balanced teams बनाई हुई हैं। Both side पे we have Butterfly, जो बटरफ्लाई इज ऑल्सो अ वॉरियर एंड असैसिन स्लैश हीरो, तो वो भी काफ़ी पावरफुल रहती हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि टीम वैल्हैला इज सॉर्ट ऑफ regrouping or thinking, I don't know what they're doing, they're still at the base, while on the other hand Apex Gold has spread out with one hero on the top lane, one hero in the dark slayer lane, and 2 of them going upwards from the bottom lane, and यहाँ पर काफ़ी well spread out किया हुआ है इन्होंने अपने आप को। एंड जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब फाइट काफ़ी इंगेज होने की एंगेजमेंट की तरफ जा रही है टीम।
एग्जैक्टली टावर्स के पास यहाँ पे पहुंच चुकी है टीम और एपिक्स अभी राइट नाउ सीन बनता हुआ नजर आएगा, बट लेट्स सी कि क्या बनता है कुछ ही टाइम के अंदर। जी बिल्कुल I'm just we're waiting to see कि what team Valhalla is up to. They're sort of still moving around their base and ये अपने minions deploy हो जाए। I think कोई connection issues आ रहे हैं शायद क्योंकि butterfly का reconnected का मे बी क्योंकि नजर अगर आ बात रहा कीजिए है। अपनी बेस से अभी तक बाहर नहीं निकल रही, जी बट आई थिंक अगर बात कीजिए यहाँ पर भी यहाँ पर रहना, आई डोंट नो कि व्हाट हैपन कि यहाँ पे क्या सीन रहने वाला। मे बी वंस अगेन हमें यहाँ पर रीमैच की तरफ जाना पड़े, वंस अगेन एक नई लॉबी बनानी पड़े। मे बी आई डोंट नो कि व्हाई दीज गाइज आर नॉट मूविंग फ्रॉम द बेस, क्योंकि बेस से निकलना इज लाइक अ मेन थिंग। आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि अगर बेस से निकल के आगे नहीं जाएंगे, रिसोर्स जमा नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सीन कैसे अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर बात कीजिए फाइनली यहाँ पर प्लेयर्स जो हैं यहाँ पर अपनी बेस की बात कीजिए, बेस से निकल के आगे जाना स्टार्ट हुए हैं और नाउ दीज गाइज आर मूविंग फॉरवर्ड टू द फाइट। यहाँ पर कोई बात कीजिए यहाँ पर पहले आते ही मतलब कि आते ही मेन मॉन्स्टर के ऊपर यहाँ पर अटैक किया जाता है। यहाँ पर भी ड्रैगन्स को यहाँ पर भी लेके जाएगा, पर फर्स्ट ब्लड यहाँ पर भी सिक्योर किया जाता है। लुक एट दिस, यहाँ पर भी एक प्लेयर दोनों टीमों से एक प्लेयर हमें छोड़ के जा चुका है। नाउ वन सेकेंड छोड़ के जा नहीं चुका, बट वो थोड़ी देर बाद रिवाइव होकर वापस आ जाएगा। कुछ सेकंड्स मिलते हैं, अगर पहली दफ़ा नॉक होता है तो यहाँ पर कुछ सेकंड में बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, बट वन सेकेंड वही प्लेयर दोबारा से नॉक होता है तो वो वो उसको थोड़ा और टाइम लगेगा कि वो थोड़ा सा और लेट वापस आएगा, रिकॉल वो वापस लेट होगा। इसी तरह अगर बात की जाए बार बार वो अगर नॉक होगा या अपने आप को रिकॉल करेगा मिस्टेक, तो वो टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा। जी बिल्कुल टाइम इंक्रीज होता जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम देख रहे हैं कि टीम वैलहला के 2 प्लेयर्स यहाँ पे इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं टू द प्लेयर ऑफ टीम एपेक्स गोल्ड हु वाज यूजिंग द ऑर्सर एंड ही इज़ अ वॉरियर एंड यहाँ पर ही इज़ एक्चुअली चूजिंग टू रिमेन इन द रेंज ऑफ हिज डिफेंस टावर। ही इज़ नॉट गोइंग टू टेक अ 1v2 फाइट एंड दैट्स एक्चुअली वेरी वाइज डिसीजन। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एपेक्स गोल्ड आगे बढ़ती जा रही है। आई थिंक उन्होंने एक टावर डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, टीम वैलहला का एक टावर डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी रीग्रुप किया है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक फाइट्स में इंगेज करें एंड टीम वर्क के थ्रू यहाँ पर फाइट की जा रही है। सॉरी टू कट यू आउट मिस्टेक, बट अगर बात की जाए यहाँ पर हीरोज़ की, यहाँ पर मिस्टेकनली दोनों के पास बटरफ्लाई आ चुकी है, तो वो यहाँ पर भी रीमैच की तरफ हमें जाते हैं, एक लॉबी नई बनाते हैं, कुछ ही देर के अंदर वापस आते हैं गाइज। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस मिलते हैं आपको और वापस आके बात करते हैं कि क्या सीन आने वाला है। नेक्स्ट लॉबी जल्दी से तैयार हो जाएगी, कुछ सेकंड्स की बात है। So we decided to stay on the caster desk पे रहते हैं जब तक यहाँ पे लॉबी तैयार होती है, क्योंकि लॉबी कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पर रीमेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ टाइम नहीं लगता यहाँ पर लॉबी को क्रिएट होने में। यहाँ पे जल्दी से लॉबी एक नई लॉबी के अंदर यहाँ पर भी बनते हुए नजर आएगी और कुछ ही के देर के बाद हम एक सेकंड मैच के ऊपर जाएंगे। देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पर विन करते नजर आती है, कौन सी टीम यहाँ पर एक अच्छा गेम प्ले निकालते नजर आती है। और मिस्टेक व्हाट्स योर मतलब कि भी एक एक्सपीरियंस, व्हाट योर एक्सपीरियंस राइट नाउ कि भी कैसी AOV गेम कैसी लग रही है आपको? Funny thing is I actually just downloaded this game yesterday but already level 14 पे पहुंच गई। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एक्साइटिंग गेम लग रही है एंड जो सबसे द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस गेम इज़ दैट बहुत इसमें वैरायटी है। You have over 100 heroes to choose from. You can build your hero, you can customize your hero, different skins and different items equip हो सकते हैं एंड काफ़ी डाइवर्स गेम है इस तरह कि आप कोई भी अटैक टाइप चूज़ कर सकते हो, आप किसी तरह का हीरो चूज़ कर सकते हो और आप उस एबिलिटी पे बिल्ड कर सकते हो। जिस तरह लेट्स से I choose a mage. One of my favorite heroes are actually mages and marksmen, not only because they have fragile HP, but because उनकी range इतनी ज़्यादा है कि वो काफ़ी दूर से अटैक कर सकते हैं। They can throw their spell effects, they can throw their bombs, they can throw their arrows and gain up a lot of kill points. And I think कि यहाँ पर if you compare it to other games, AOV की एक specialty इस तरह है कि हर चीज़ में ना you have to be creative with how you take it. And competitive AOV is sort of like it's an art.
because you're combining so much. आप अपना हीरो चुन रहे हो, आप उसके आइटम्स चुन रहे हो, उसकी abilities, उसकी skills चुन रहे हो, you're building it into something, और आप you're putting a lot of energy and focus into it. एक तरह का कला बना दिया इन्होंने आजकल की गेमिंग को, which is actually something very very advanced, and I think this is the future that esports should be going towards. The graphics, the gaming skills, the strategies that all of this they require. एक तरह का AOV ने बिल्कुल एक नया, they've brought a new dawn to Pakistan, and I think other games should definitely be following into their footsteps as well. Demon, एग्जैक्टली यहाँ पर इतनी बातें कर ली हैं भाई कि भी मिस्टेक ने मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ बता दी. दिस इज एक्चुअली अमेजिंग, क्योंकि ये होता है इंटरेस्ट. मतलब गेम को देख के जितना मुझे मज़ा आ रहा है, जितना कास्ट करके मुझे मज़ा आ रहा है, दिस इज एक्चुअली अमेजिंग. AOV की जितनी तारीफ मैं करूँ कम, मतलब उतनी कम रहने वाली है. बट टीम्स के बारे में बात करते हैं कि जो टीम्स इतनी अच्छी गेम प्ले करके स्टेज तक पहुंची है, सेमीफाइनल तक पहुंचना भी एक ऐसी गेम, न्यू गेम जो कि पाकिस्तान के अंदर आती है, उसके अंदर इस तरह की डोमिनेशन दिखाना, मिस्टेक इस तरह का गेम प्ले निकालना, मतलब कि भी अमेजिंग. यहाँ तक पहुंचना भी एक बड़ी बात है. बट स्पेशली मतलब कि हर जो भी 4 टीमें रहने वाली हैं हमारी, उन सबको शाउट आउट देंगे. लाइक नो डाउट एरो की बात की जाए, एरो यहाँ पर लूज कर चुकी है सेमीफाइनल को. बट नेक्रो की बात की जाए, नेक्रो esports प्लेड एक्चुअली वेल. ये एक ऐसी टीम रहने वाली है जो कि कल के दिन के अंदर फाइनल खेलते हुए नजर आएगी. एंड अभी राइट नाउ जो अभी सेमीफाइनल के जो 2 अभी टीमें हमारे सामने रहने वाली हैं, एपिक्स गोल्ड एंड वलहाला. नो डाउट वलहाला को तो मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था, बट मिस्टीक एक्सप्लेन वेरी वेल. मतलब कि मिस्टीक का सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे यही लगती है कि शी इज़ द बेस्ट कास्टर ऑफ पाकिस्तान एंड शी नो हाउ टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सिंगल थिंग. भाई ये चीज़ इसकी ज़बरदस्त रहने वाली है. तो नो डाउट एपिक्स गोल्ड एंड कुछ ही देर के अंदर हमारे सामने वंस अगेन लॉबी तैयार हो जाएगी. और लॉबी बल्कि तैयार क्या हो जाएगी, लॉबी तैयार हो चुकी है मिस्टेक, और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर हमारे पास मैच स्टार्ट हो जाएगा. और टीम्स जो हैं अभी रेडी रहने वाली हैं, और देखते हैं कि क्या बनता है मिस्टेक. क्योंकि मैं काफ़ी होगा ना, काफ़ी देर से इंतजार करूँगा कौन सी टीम इस मैच के अंदर डोमिनेशन दिखाती नजर आएगी. अगर वलहाला निकलती है तो मिस्टेक काफ़ी मज़ेदार सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वलहाला के पास सिर्फ एक विन और चाहिए होगा. वो एक विन और करेगी, अपने लिए सेमीफाइनल को भी विन करके फाइनल के अंदर यहाँ पे कदम रख लेगी. बट अगर लूज करती है तो यहाँ पर एपिक्स यहाँ पर भी स्टेप इन करता हुआ नजर आ रहा होगा. यहाँ पर वलहाला को यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक के लगवा रहा होगा कि यहाँ पर नहीं, इतनी तेजी अच्छी नहीं है. एपिक्स के बॉयज भी यहाँ पर रहने वाले हैं. तो बट वलहाला हैव लाइक दी गुड एक्सपीरियंस ऑफ द गेम. नो डाउट वलहाला के बॉयज ने जिस तरह अभी पहला मैच विन किया है, दिस इज एक्चुअली अमेजिंग. बट लेट्स सी कि वलहाला वो अपनी जो विनिंग स्ट्रीक है उसको यहाँ पे बरकरार रखती है कि नहीं रखती. जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर ऑल दोज कॉम्प्लीमेंट्स एंड फॉर एक्सप्लेनिंग. बट मेरे साथ साथ तो आपने भी एक बिल्कुल ही इंटरेस्ट गैदर किया हुआ इस गेम में, एंड योर को कास्टिंग इज व्हाट हैज़ enabled me to cast this well, because अकेले caster I don't think they can achieve to the level that we are bringing this game here. It's also the confidence and the inspiration that our co-casters give us, and together we build this community. So thank you for your support here. But other than that, जैसे आपने बात की, हम एक टीम्स को बार एक फिर से शाउट आउट दें कि जिस तरह ये परफॉर्म करें. टीम Valhalla and Apex Gold, they are the pioneers of bringing Arena of Valor to Pakistan. And वो जो होते हैं ना, वो जो बिल्कुल टॉर्च लेके गेम को ला रहे होते हैं, मैं कहूँगी हम उन्हीं के लिए टैलेंट हंट है, ऐसे प्लेयर्स के लिए जो इस गेम को नॉट ओनली वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, बट इंशाल्लाह टुमारो विल बी सीइंग कि कौन सी टीम इधर से फाइनल्स तक पहुंचती है एंड फेसेस ऑफ अगेंस्ट टीम Necro Esports in the finals. And I'm quite excited for that, and really excited to see how 2 talented teams clash. But right now, talking about Valhalla Sports and as well as team Apex Gold. Apex Gold has been giving an eye for an eye and a tooth for a tooth and a life for a life. They've been fighting hard, they've been giving it their Exactly. best. तो उनकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी ही जा रही है. द ओनली थिंग जो मैं बार बार दोहराऊंगी इज़ दैट दे हैव टू लर्न कि उन्होंने अपनी एबिलिटीज़ बिल्डअप करनी है. दी स्लाइटेस्ट मिस्टेक जो वो कर रहे हैं, जो टीम Valhalla इज़ कंटिन्यूसली बिल्डिंग अप ऑन इज़ कि वो बार बार अबिस्मल ड्रैगन को डिफीट करें, डार्क स्लेयर को डिफीट करें, उस तरह की एबिलिटीज़ गैदर करें जिससे उनकी HP पॉइंट्स, उनकी मूवमेंट स्पीड, अटैक स्पीड, डैगर्स, इस तरह से वो अटैक करें कि अगली टीम के पास वो स्किल लेवल ही नहीं बनता, वो अटैक लेवल ही नहीं बनता जो टीम Valhalla इस गेम में ला रही है. और आप देखें वो पहली चीज़ जो Valhalla ने किया है, दे एंगेज द माइट कॉलम.
there is proof of what I just said, that the first thing that they're doing is engaging the might golem. इससे ये might buff points लेंगे, जिससे ये जब अपना attack damage करेंगे on the other team, they are going to obviously be dealing more damage. Exactly. So that is the sort of the confidence and the mindset that you should be bringing into the game, that the way that if you are going to and यहाँ पर bottom lane में देखा जा रहा है कि engage भी हो रहे हैं, 4 players Valhalla के इकट्ठे move कर रहे हैं, and we have a 1v3 situation जिधर 2 players Apex Gold के नीचे से आ रहे हैं और एक ऊपर से आ रहे हैं, they're trying to build a gank level game, but यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो अपने defense towers की ही range में रह रहे हैं, and जिस तरह वो अपनी strategy employ कर रहे हैं, that is quite impressive, Demon. एग्जैक्टली एंड एपिक्स के ऊपर फर्स्ट ब्लड यहाँ पर भी अगर बात की जाए, एपिक्स का पहला प्लेयर यहाँ पर भी सबसे पहले अपनी किल देता है, बट नो वरीज यहाँ पर भी अभी सीन होगा, ये रिवाइव हो चुके हैं, वापस आ चुके हैं, नो डाउट। वंस अगेन मैं दोबारा से बताता हूँ कि भाई जितनी दफ़ा यहाँ पर भी प्लेयर्स जो है वो नॉक एलिमिनेट होता है, वो वापस से रिवाइव होता है, दोबारा से स्पॉन होता है, तो वो स्पॉन होता है तो उसको कुछ यहाँ पर सेकंड्स लगते हैं, जितना वो बार बार अगर वो एलिमिनेट होता रहेगा, बार बार वो यहाँ पर भी स्पॉन होता रहेगा, तो यहाँ पर टाइम जो है वो टाइम पीरियड उसका इंक्रीज होता रहता है, तो ये सीन यहाँ पर बनता रहेगा। तो कुछ ही टाइम की कोई बात कीजिए, यहाँ पर भी नो डाउट वल्हाला वंस अगेन भी आइटम्स को जमा करने में और अपनी एबिलिटीज़ को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने में, यहाँ पर वंस अगेन वो काफ़ी फास्टर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी तेज़ नज़र आ रहे हैं भी कंपेयर टू एपेक्स गोल्ड। नो डाउट एपेक्स गोल्ड भी उनके मद्दे मुकाबिल मिस्टेक चलते हुए नज़र आ रही है, और यहाँ पर अगर बात कीजिए नो डाउट दोनों टीमें काफ़ी एक्सपीरियंस रहने वाली हैं, यहाँ तक पहुँचना इट्स मीन कि दोनों टीमें इस लेवल की हैं कि वो ये सारी चीज़ें समझती हैं, हर गेम को 1 by 1 एक एक पेज को वो जानती हैं, तो दैट्स वाई दिस टीम इज़ हेयर। बट नो डाउट गाइज, मतलब अगर बात की जाए सीज़न 2 जो आने वाला है, एक बड़ा सीज़न जो आने वाला है, तो उसके लिए आप भी रेडी हो सकते हो, तो वाई नॉट यू गाइज पार्टिसिपेटिंग इन द सीज़न 2। तो मेक श्योर यू गाइज डाउनलोड द AOV दी अरीना ऑफ विलोर अपने मोबाइल्स में डाउनलोड कर लें, ताकि भी नेक्स्ट जो कंपटीशन आ रहा है वो छोटा मोटा कंपटीशन नहीं होने वाला, 50 लाख प्राइस पूल मिस्टेक, एक बड़ा प्राइस पूल आने वाला, उसमें तो मेरे ख्याल से सारे बॉयज़ को यहाँ पर भी इस गेम को भी समझना चाहिए और इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी बिल्कुल डीमन, 50 लाख का प्राइज पूल, दैट इज something that everybody should be waiting for, and definitely they should be downloading Arena of Valor and ranking up their skills and experience in the game, because this game is a doorway, it's a portal, and it's opening new worlds for you, new opportunities for you. जिस तरह आप देखें PUBG, Dota, Valorant ये बढ़ती गई है, Arena of Valor is something greater, it is bigger and better, and अभी इसका सिर्फ यहाँ पर शुरुआत हुई है, आगे से आगे आप जैसे देखेंगे तो इसकी टूर्नामेंट्स, इसके कम्युनिटी इतनी बढ़ती जाएगी कि you're going to be enjoying just this game and nothing else. So I think Arena of Valor is a game that everybody should be focusing on. They should be, downloading it. And MOBA players, वैसे भी, I really enjoy those because they have this portability. आप कहीं भी बैठे हो, आप कहीं भी बोर हो रहे हो, mobile data on करें and you start playing the game. So I think it's something that everybody, can enjoy. And, bringing us back to the game, we can see that Valhalla is again dominating Apex Gold with 7-1 kills, and their lead is just incredible. And the funny thing is that actually Apex Gold has defeated the Dark Slayer here. I think उनके पास एक monster defeat है, although Valhalla के पास नहीं है, but they're still kind of dominating with that strategy. Although Apex Gold is giving as good as they're getting, 4 versus 7, वो भी अपनी gang kills build up करते जा रहे हैं, and वो यहाँ पर हसनैन एक्स हम देख सकते हैं recall के लिए हैं, जो अपना recall किए जा रहे हैं, वापस बेस जाएंगे, अपनी HP reload करके वापस गेम में आएंगे, and we can see कि वो fight में काफ़ी अब Apex Gold ने, as you can see right now on the map, they're kind of being very intelligent, very cunning with their gameplay. They have spread out डिफरेंट कॉर्नर्स में इनके प्लेयर्स रोम अराउंड कर रहे हैं, और ये अपने टावर्स को काफ़ी डिफेंड कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट खुद भी अपने डिफेंस टावर्स की रेंज पे रह रहे हैं। अब उनके 3 प्लेयर्स इंगेज करने जा रहे हैं 2 प्लेयर्स ऑफ टीम वैलहला को, एंड लेट्स सी हाउ दैट फाइट कम्स आउट, बट दे आल्सो they're going for the Bismal Dragon. There we go. They have learned their lesson, Demon. They have finally gotten the gist of it, that they need to really defeat these monsters to build up with their skill levels. और यहाँ पर ये 2 monsters को defeat करके काफ़ी build up करके 6 versus 8 पे अपना skill level ला चुके हैं. That shows that they are learning quickly. They are quick learners and they're ready to bring the heat to this battle.
एग्जैक्टली यहाँ पर नो डाउट ये काफ़ी एक लर्निंग प्रोसेस रहने वाला है, और यहाँ पर नो डाउट यहाँ पे अभी तक तो जितने मुकाबले लड़के इस स्टेज तक पहुँच चुके हैं, इतना उनके पास अभी एक नॉलेज आ चुका होगा इस गेम के बारे में कि अभी किस तरह यहाँ पर खेलते नजर आ रहे हैं। और राइट नाउ नो डाउट अगर बात की जाए वलहाला की, वलहाला इज़ प्लेइंग वेल, बट दूसरे साइड पर अगर बात की जाए एपिक्स, एपिक्स अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर काफ़ी जोर दे रही है, अपनी एबिलिटीज़ को काफ़ी जल्दी से जल्दी भी इंगेज करना चाह रही है। बट अगर बात की जाए आइटम्स की, लुक एट दिस, मतलब कि अभी एपिक्स इस इन दिस मैच अपनी एबिलिटीज प्लस आइटम को अरेंज करना बड़े टाइम टू टाइम यहाँ पर भी एक टाइमली अगर बात की जाए तो वो अपने हर चीज़ को अरेंज करते नजर आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बट सेम अगर गोज टू दी अदर साइड अगर बात की जाए वलहाला की, तो वलहाला इन दिस मैच थोड़ा सा स्लो बिट नजर आ रही है। और उसी के साथ अगर बात की जाए एक प्लेयर यहाँ पर लूज करती है, यहाँ पर रिकॉल पे आ जाएगा, यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स के बाद वो वापस आने वाला है। और बट स्टिल यहाँ पर अगर बात की जाए वलहाला की, तो वलहाला इज नेवर स्लो, यहाँ पर भी स्लो नहीं हो रही। लुक एट दिस, यहाँ पे डैमेज देना स्टार्ट कर दिया है, टावर यहाँ पर काफी लो होने वाला है। बट अगर बात की जाए प्लेस की एचपी की, तो प्लेस की एचपी भी काफी लो होने वाली है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर भी स्लो डाउन जरूर हो जाएंगे। बट अगर बात की जाए टावर की, टावर काफी अपनी एचपी जो है खो चुका है, और यहाँ पर टावर काफी वीक रहने वाला है। तो यहाँ पर एपिक्स को थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर टीम जो है वलहाला वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस यहाँ पर बिल्ड तभी होती है यहाँ पर टावर्स यहाँ पर डाउन होते रहते हैं। बट अगर बात की जाए एपिक्स की, तो एपिक्स 2 टावर डाउन कर चुकी है राइट नाउ, जबकि वलहाला इन दिस मैच यहाँ पर सिर्फ अभी एक टावर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हुई है। तो दिस इज एक्चुअली गुड, 1 वर्सेस 2, मतलब कि अभी असल में कहानी तभी खत्म होगी बेशक यहाँ पर वलहाला सारे टावर यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दे एपिक्स गोल्ड के, या एपिक्स गोल्ड यहाँ पर सारे टावर्स डिस्ट्रॉय कर दे टीम वलहाला के। बट जब तक वो मेन टावर को डिस्ट्रॉय नहीं करते तो तब तक वो विन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बेशक आप सारे टावर्स को छोड़ के मेन टावर पे अटैक कर दें तो भी काफ़ी अच्छा सीन बन सकता है। आप मेन टावर पे जाके अटैक कर दें, मेन टावर को डिस्ट्रॉय कर दें तो भी आप विन कर सकते हैं। तो मेन टावर इज योर मतलब कि योर मेन थिंग, जिसने मेन टावर सबसे पहले डिस्ट्रॉय कर दिया वही टीम यहाँ की आज के दिन की विजेता होगी, वही टीम विनर होने वाली है। तो देखते हैं कि भी कौन सी टीम यहाँ से आज के दिन के अंदर, या वलहाला या तो यहाँ पर एपिक्स गोल्ड, दोनों में से तो कोई एक टीम हमें फाइनल के अंदर यहाँ पर अपना गेम प्ले करते नजर आएगी। और नो डाउट अगर बात की जाए भाई जो टीम ऑलरेडी विन कर चुकी है और जो इसमें से जब विन करके जाएगी तो कल का जो मुकाबला, फाइनल का जो मुकाबला देखने वाला होगा, और नो डाउट वो देखने लायक होगा मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट टीम्स फाइनल के अंदर उतरेंगी। जी बिल्कुल डीमन, जैसे आपने कहा है कि हमें यही नज़ारा देखेंगे हम कल कि कौन इधर सेफ टीम फाइनल में पहुंचती है और नेक्रो स्पोर्ट्स के अगेंस्ट फाइट लाती है। बिकॉज अभी जैसे आप देख सकते हैं कि एपेक्स गोल्ड ने 3 टावर्स ड्रॉप कर चुके हैं वो टीम वलहाला के, and they're kind of they're bringing back their game, they're bringing back their A game, और वो इस तरह 10 versus 14 kills तो है, but what matters is how many towers you destroy and how quickly you get to the base of the enemy and destroy that. So I think Apex Gold is taking it slow, they're being very patient, they're employing a lot of strategy, जिधर उन्होंने 2 Abysmal Dragons को defeat किया, Dark Slayer को defeat किया, जिस तरह आप देख सकते हैं जो पिछले मैच में टीम वलहाला ने किया वही चीज़ एपेक्स गोल्ड इस मैच में करिए, जिधर अब वो अपने एबिलिटीज़ पे फोकस करें, वो अपना स्किल लेवल अपग्रेड करें, और जो उनका अल्टीमेट लेवल स्किल होता है जो सिर्फ 3 या 4 आई थिंक नॉट्स ऊपर अपग्रेड हो जाता है, वो उसी चीज़ पे फोकस करें, बिकॉज दैट इज़ द स्किल लेवल दैट गिव्स यू द मोस्ट डैमेज. On the other hand, we can see the team Valhalla has finally dropped another tower of the blue team, and they're also bringing back their A game. Enraged Abysmal Dragon को defeat करने की तरफ I think जा रहे हैं. Once this dragon goes to the enraged level, the points that you get from it are a lot, but it also deals you a lot of damage. So I think they're taking that chance, but there we go. That's a fun thing, Team Apex Gold just jumped in, and जहाँ पर उनका weak point है Team Valhalla का, वो अभी fight ले रहे थे Dragon के साथ, उधर ही आके उन्होंने attack किया और वो gang kill की तरफ कोशिश करी है. But the thing about Team Valhalla is कि यहाँ पर उनके पूरे 4 के 4 थे. Oh my God, this is the chance. Yeah, that was unpredictable. They just slammed down Apex Gold, although यहाँ पर बनता Team Apex Gold का ही था that they should have defeated the other team, but because they were 4 versus 3 and they retained their sense of surrounding, अपनी strategy teamwork की तरफ रहे और वो अपना साथ
Yeah, another tower down because उन्होंने अब Drake ले आए हैं. So when you defeat the Dark Slayer, you get this Drake जो आपको help करता है Oh to my destroy God. other towers. And now they're on a rampage. It's 11 versus 21 with 4 towers, and they're just moving on. And their HPs are full. All of their skill level is to the maximum with 11 and 12. In front of the main tower. Yeah, they've brought it to the main tower. अब तो main base ही रह गई है. उन्होंने mid lane के सारे towers destroy कर दिए हैं. No defense strategy left for Team Apex Gold in the mid lane, which they are going to have to defend very carefully. उनको अपना ये एक empty lane रह गई है जिधर अगर 4 या 5 players इकट्ठे आए Team Valhalla के तो उनको काफ़ी मुश्किल face करनी पड़ेगी because they have no defense towers left. And that's what happens when you defeat the Dark Slayer and get that Drake to help you. As well as the Abysmal Dragon. यहाँ पर टीम Valhalla अब आराम से डिस्पर्स होके स्ट्रैटेजी अपनी एम्प्लॉय करेगी. एंड यहाँ पर पांचों प्लेयर्स बिल्कुल मिड ऑफ द मैप में टीम एपेक्स गोल्ड एम्प्लॉय कर रही है. कम्युनिकेशन पे बिल्ड करें, टीम वर्क पे वर्क करें. देयर ट्राइंग के जस्ट थ्रू द sheer power of teamwork and the sheer combined the strength of their abilities कि वो किसी ना किसी तरह टीम Valhalla के प्लेयर्स को डिफीट करके मिड लेन के टावर्स डिस्ट्रॉय करें. Although it would be more sensible कि वो बॉटम लेन में सिर्फ एक टावर रह गया उसको टेक डाउन करके उनकी मिड बेस मेन बेस की तरफ मूव करें. But let's see how they move through this because it's still a bit of a balanced 5 versus 3 towers unless and until that Team Valhalla just comes storming down the mid lane and takes down their main base. एग्जैक्टली भाई ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है क्योंकि बात की जाए नो डाउट एपिक्स लेजेंड को अपने मिड के ऊपर काफ़ी जोर देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मिड उनका बिल्कुल एक ओपन रोड बन चुका है क्योंकि यहाँ पर सीधा यहाँ पर भी चार्ज होता हुआ नजर आएगा. लुक एट दिस. अगर बात की जाए यहाँ पर भी दोनों साइड से एक प्रॉपर वेल मैनेज गेम प्ले अभी भी जारी रहने वाली है. एपिक्स भी अभी फुल अपना जोर डाल रहा है कि यहाँ पर भी कम बैक कर सके इस फाइट के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पर भी स्लो डाउन करे वल्हाला को क्योंकि वल्हाला एक ऐसी टीम रहने वाली है जो कि बिल्कुल स्लो डाउन नहीं होते हुए नजर आ रही. एंड वंस अगेन वो एक होली ड्रैगन के ऊपर यहाँ पर भी चार्ज करना चाह रही है एंड होली ड्रैगन के साथ ही यहाँ पर भी मेन टावर की तरफ जाने वापस बढ़ते हुए शायद नजर आए. एंड लुक एट दिस एक कंबाइंड चार्ज बट इसी टाइम पे आती है टीम एपेक्स गोल्ड और इस मौके पे चौका मारना चाह रही होती है बट इसी से पहले कि वो मौके पे प्रॉपर चौका मारे इससे पहले यहाँ पर भी टीम वल्हाला वंस अगेन रेडी हो जाती है और एक जबरदस्त किस्म का बैक फायर करती है. और ये टीम देखते हैं कि अब वल्हाला की अगर बात की जाए स्पेशली 3 प्लेयर्स सामने डाउन कर चुकी है. दिस इज द टाइम कि ये टीम उठ के सामने जाए और वंस अगेन एक दोबारा मेन टावर पे चार्ज करे. बट इससे पहले कि वो ये चार्ज करे वो यहाँ पर इन्फिनिटी स्लेयर के ऊपर वंस अगेन यहाँ पे चार्ज करती है. और क्योंकि इन्फिनिटी स्लेयर की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा ड्रैगन रहने वाला है मतलब कि इसको मैं कहूँगा कि ये इनका साथी बच जाएगा. मतलब कि यहाँ पर भी 5v5 नहीं यहाँ पर 6v5 चलता हुआ नजर आएगा. एंड नाउ दिस इज द टाइम यहाँ पर चार्ज बनता हुआ नजर आ रहा है एंड यहाँ पर टावर पे टावर नेक्स्ट लेवल टावर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है. नाउ दिस टीम मूविंग फॉरवर्ड टू द मेन टावर की तरफ जाने बढ़ते हुए यहाँ पर एक प्लेयर के ऊपर यहाँ पर फाइट करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे. यही टाइम रहेगा क्योंकि टावर अगर आपके साथ इन्फिनिटी स्लेयर जब तक रहता है तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी एक हैवी सीन बनता हुआ नजर आएगा मिस्टेक क्योंकि अगर मेरे ख्याल से वल्हाला ऑलरेडी विन दिस मैच. जी बिल्कुल Demon, and I also think that Valhalla has the upper hand because 6 versus 3 towers destroyed and they're just bringing the heat right to the main base. उनकी full HP है, full attack mode में आ रहे हैं वो. उन्होंने अपनी ability सारी employ की हुई है and they're strategically moving within a group. All 5 of their players and they're not really going elsewhere. They're not leaving the range of each other's defense abilities and they're going to try and take down the main base, although main base does deal a lot of damage because वो खुद भी defensive tower ही होता है. But Apex Gold is actually putting up a great fight. I like the way that they're employing their mage powers and abilities. Spells काफ़ी employ किए जा रहे हैं उनकी major marksman की तरफ से. Imam Malik is putting up a great fight and they're just pushing back Team Valhalla and they're काफ़ी वो यहाँ पर they're giving it their all. They're giving it their best because if they lose this match then the last match is going to be very very risky because if they lose that then they're definitely out of the finals and out of the running for these finals. God. But यहाँ पर Team Valhalla is just on a rampage. They are going into full beast mode. बिल्कुल savages की तरह ये attack करते जा रहे हैं बार-बार. Although उनकी HP is low हो रही है, I think कि अपना heal
एंड इन्हांस्ड रिस्टोर एबिलिटीज एम्प्लॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी टीममेट्स की भी एचपीज बार बार रिवाइव होती जा रही हैं, विच इज़ एक्चुअली a really good strategy. But the thing is that they have a lot of abilities on their side. They have 3 dark slayers that they defeated and 8 towers that they've destroyed. और अब जो रह गया है वो सिर्फ मेन बेस है. बट बात ये रहती है कि Apex Gold is putting up a great defensive strategy. They are not leaving their main base. बिल्कुल उन्होंने mid lane protect की हुई and they're trying their best to not let Valhalla win this match. Oh And even if my Valhalla wins, they are not giving them an easy win. They are going to make them pay for the towers that they've destroyed. And put Valhalla now coming in to the main base, employing all of it. And there we go. Finally. A victory for Team Valhalla. Finally, this is what I was waiting for. भाई टीम वलहाला ये चीज काफी मतलब कि भी वो टीम एपिक्स ये चीज समझ चुकी थी. मिस्टेक एट द एंड अगर बात की जाए वलहाला की, नो डाउट व्हाट ए गेम प्ले एंड लुक एट द एमवीपीज, लुक एट द स्कोर कार्ड. जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा स्कोर कार्ड है. एमवीपीज आप देख सकते हैं, एम हमाम मलिक एंड काफ़ी ही एक अच्छी गेम प्ले इन्होंने दिखाई है. एंड ज़बूज़ा आई थिंक फ्रॉम टीम वैलहला 10,000 and 11,000 of points collected. Their damage, the towers that they've destroyed, बहुत ही इन्होंने compiled gameplay किया where their strategy and their teamwork was excellent. But apart from that, the MVPs, kudos to them for putting up a great fight, and for Valhalla to the 29-11 kill. And after this, we will be back with the last match. Going to be taking a short break. Thank you and stay tuned.
एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर मैं और मिस्टेक आपके सामने आ चुके हैं और ये लास्ट मैच रहने वाला है। अगर तो सीन बनता हुआ अच्छा बनता हुआ नजर आया, बट आई थिंक वल्हाला कैन डू दिस इजीली, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग हैंड उनके पास आ चुका है, थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेशन उनके पास आ चुकी है। बट गाइज दिस इज द लास्ट मैच ऑफ द डे, और जो भी टीम यहाँ पर, अगर मेरे ख्याल से यहाँ पर वल्हाला हैव लाइक ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि वल्हाला हैव द स्ट्रॉन्ग चांस कि वो इजीली विन करके यहाँ पर जंप करके आगे जा सकती है। बट व्हाट यू थिंक मिस्टेक, एपिक्स गोल्ड के कितने चांस रहने वाले? हालांकि एपिक्स गोल्ड एक टक्कर का मुकाबला दे रही है सब। Definitely, I think we can't just, put them out of the running just yet, because last match they put up a great and quite an extraordinary fight, because नो डाउट। काफ़ी ही इन्होंने अच्छा गेम प्ले दिखाया, where although team Valhalla was quite dominating, especially in the last rounds, but just that, the confidence and the determination that team Apex Gold brought to the table was extraordinary. And I think could be that this might be the turning point where they win this match and give Valhalla a run for their money. But we can't say anything too early, because we have to observe कि जिस तरह ये लोग गेम का शुरू कर रहे हैं, किस लेन में जा रहे हैं, कौन से पहले मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। बिकॉज एक चीज़ मैंने देख ली है और कंफर्म कर लिया है कि जीत उसी की होती है जो ज़्यादा मॉन्स्टर्स को डिफीट करता है, ज़्यादा एबिलिटीज़ रेकअप करता है और अपनी स्ट्रैटेजी ज़्यादा केयरफुली एम्प्लॉय करता है। एंड देखते ही आप देख सकते हैं कि कि जो एपेक्स गोल्ड का एक प्लेयर है वो माइट गॉलम को इंगेज करते हुए शायद नज़र आए हमें। ही इज़ ट्राइंग टू गेट दैट kill points and those attack damage points, but we're not sure because he keeps roaming on that side. On the other hand, team Apex Gold की जो positioning है वो काफ़ी अच्छी है। One hero in the top lane, one in the bottom lane, dark slayer lane actually, and two in the bottom lane and two in the mid lane. So they've dispersed themselves out, one-on-one fights को engage करने की कोशिश करें। bottom lane में 2v2 हमें नज़र आ रहा है। and जो team Valhalla के players हैं वो obviously एक genius move है कि वो अपनी defense towers की range के अंदर ही रह रहे हैं। so यहाँ पर they're making sure कि अब they know this is the match, this is the minute to win it. ये मैच जीत गए तो बस वो फाइनल्स में पहुंच जाएंगे, and they are going to take this as slow as it goes. They're going to take it as long as it takes, because they are looking here to win and to go straight into the finals to clash with team Necro Esports for tomorrow. And team Apex Gold on the other hand is looking to turn the tables over. वो ये देखना चाह रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह इस मैच को जीत के थोड़ा सा और अपने आप को रनिंग में रखें, अपने आप को एक चांस दें कि वो भी फाइनल्स में पहुंच सके, because they are a talented team and they are quick to learn. बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा। यहाँ पर नो डाउट टैलेंटेड टीम रहेगी। यहाँ पर भी वो भी यहाँ पर भी एक गेम प्ले दिखा के चीज़ ऑलरेडी बता चुकी है ऑडियंस को कि यहाँ पर भी कितनी एक वेल मैनेज टीम रहती है। हर प्लेयर मतलब कि हर प्लेयर यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपर कहते हैं अपने प्रॉपर हक से निभाता हुआ नज़र आ रहा है, और काफ़ी एक लेवल टीम, एक बैलेंस टीम नज़र आ रही है कि यार कि वाकई ये सारे के सारे प्लेयर्स एक वेल नोन रहने वाले हैं, इस गेम को समझते हैं और काफ़ी अच्छा गेम प्ले करते नजर आ रहे हैं। दूसरे पे बात की नो डाउट एपेक्स की भी यहाँ पर सीन काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर बात की कम्युनिकेशन लेवल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और ये चीज़ ही देखने वाली होगी कि किस तरह यहाँ पर भी खेलते हुए नजर आएंगे अगले मैचेस को। और इस मैच की भी बात की जाए तो ये मैच भी काफ़ी अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि बात की जाए नो डाउट दोनों का अभी राइट नाउ जो सीन रहने वाला है एक बैलेंस सीन रहेगा, और यही बैलेंस सीन देखते हैं भी और कितना बैलेंस रहेगा। राइट नाउ नो डाउट एबिलिटीज़ की बात की जाए, एबिलिटीज़ को काफ़ी एक मैनर तरीके से, एक मैनेज तरीके से लेवल अप किया जा रहा है, आइटम्स प्रॉपर इकट्ठे किए जा रहे हैं। यही टाइम रहेगा कि टीम जिस तरह भी खेलते हुए नजर आ रही है, जिस तरह भी अपने लिए एक प्रॉपर मैनेज करते हुए चीज़ें नजर आ रही हैं, दिस इज एक्चुअली गुड। यही टाइम रहेगा टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी नहीं किया तो फिर आगे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, नो बडी हैव एन आइडिया। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए अभी एक मैनेजेबल एबिलिटीज लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं नो डाउट। और लुक एट दिस, यहाँ पर एक क्विक चार्ज देखने को मिला, काफ़ी लो एचपी कर दिएगा, बट जिस तरह एक तेज़ी से उनके पीछे जाना, जो जल्दी से अगर बात की जाए वो अपने टावर की रेंज के अंदर आ जाते हैं, जो कि टावर के अंदर रेंज ही ऐसी है क्योंकि टावर जब अटैक करता है तो काफ़ी लो एचपी करता है, काफ़ी डैमेज करता है आपको। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सोच समझ के अटैक करना पड़ता है। बट लुक एट दिस द फर्स्ट मतलब कि अभी आपकी बात करें, लुक एट दिस आइटम्स यहाँ पर इकट्ठा करना, कोई ड्रैगन्स को प्रॉपर्ली अटैक करना, एंड अपने लिए प्रॉपर्ली एक आइटम, अपने लिए साजो सामान, मैं ये कहूँगा अपने लिए साजो सामान जमा करना, आइटम जमा करना, एबिलिटीज़ को लेवल अप करना। मतलब टीम्स नो दैट हाउ टू विन दिस मैच,
टीम वलहाला वंस अगेन एक अच्छा गेम प्ले करते हुए अपने लिए प्रॉपरली एक सिक्योर्ड बेस बनाते हुए, और यहाँ पर मेरे ख्याल से टाइम टू टाइम इनकी तरफ से एक अच्छा अटैक भी देखने को मिलेगा। एक सेंसिबल गेम वलहाला साइड से हमें देखने को मिल रही है। नो डाउट एक अच्छी टीम रहने वाली है मिस्टी। जी बिल्कुल, तो जैसे ही आपने बात की कि एक स्ट्रैटेजी गेम रहने वाली, एक्सपीरियंस की गेम रहने वाली है, एंड जैसे मैं बात करी थी कि टीम एपेक्स गोल्ड इस फाइट में एक अच्छा बैटल फ्रंट पुट अप करेगी, and that is what we are seeing here right now, which is a 1 versus 2. Like, that is the amount of kills that they have, and no towers surprisingly have yet been destroyed by either of the teams. So what both of these teams are doing is they're being very patient, they're being very slow, and they are being very careful. यहाँ पर वो एक लेवल ला रहे हैं of patience and strategic gameplay जो हमने शायद पहले मैचेस में ना देखा, because this is the make or break. And there we go, rampage from Team Valhalla. Gank, that was a gang up kill where they just, I think, took down 4, I think, of the players of the other team, and this is how they're building up their kills. And Valhalla is sort of like इन्होंने काफी अपनी एक unpredictable gameplay इस तरह किया है, and the tower is almost dead. Almost यहाँ पर ये टावर भी डिस्ट्रॉय करें. It's the thing, काफी स्ट्राइक करते हैं. They're quick and they're sudden, exactly. Like a king cobra. आराम से ये जा रहे होते हैं, and then one in a millisecond they've attacked and they've taken down a tower as well as 3 players of the other team. And I love how unpredictable and quick and sudden their strikes are. Like एकदम ये लोग अगली टीम को हिला के रख देते हैं. And इस तरह का गेम प्ले हमने I think Necro के तरफ से भी देखा था पिछले मैचेस में. But Valhalla is just and I think they've destroyed yet another tower of Team Apex Gold. Apex Gold is trying their hardest to fight back. They've defeated an abysmal dragon. They're trying to rank up their kills and defending their towers, but somehow or the other Valhalla is coming out on top. But there we go. Just as I said that, Apex Gold has destroyed a red team tower, which means that they are not giving up this fight so easily, and they are ready to bring this fight to the table. And there we see a 3 versus 3 or a 4 versus 3 actually, where there's a huge clash and a lot of proper HP points being lost. And उसी वक्त जो ये team Apex Gold का player है, he goes into the range of his defense tower because he cannot take on 3 players at once. But ब्यूटीफुल गेम प्ले जिधर आप देख सकते हैं कि जो टीम वलहला के प्लेयर्स हैं ये बार बार स्प्लिट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, स्प्लिट होते हैं, इकट्ठे होते हैं. बट देयर वी गो, टीम एपेक्स गोल्ड on the other side. I think on the top lane they've destroyed a tower of Team Valhalla as well, and they are giving an eye for an eye and a life for life. जिधर Team Apex Gold towers slyly, छुपके से, sneakily, stealthily ये उनके towers destroy कर रहे हैं. जिस तरह Team Valhalla fight, Valhalla is sort of आके ये मुंह पे लड़ती है, मुंह पे fight लेती है, and then they because वो अपने 4 players इकट्ठे लाते हैं. But the thing with Team Apex Gold that I'm kind of noticing is that they are sort of more assassin type इनका गेम प्ले है, more stealthy है. और यहाँ पर I think Dark Slayer को engage किया जा रहा है टीम वलहला की तरफ से. They're trying to take down that beast so they can get those points, and that Drake, not sure if they're going to succeed because उनका काफी HP down है. But there we go, they've defeated it. And यहाँ पर again we have a 2 versus 3, काफी low HP हो रही है टीम वलहला के players की, but they are ranking up their kills. एक kill टीम Apex Gold भी score करती है, but I think यहाँ पर एक और kill जाता है टीम वलहला की तरफ. Wow, what a gameplay, like Demon. No doubt. I'm just looking his HP and इसने इस थोड़ी सी last HP के ऊपर से 2 players को take down किया है. This is actually amazing. But Valhalla is not giving up. Once again अगर बात की जाए Apex की, तो Apex भी give up नहीं करना चाह रही. वो भी एक ज़बरदस्त किस्म की गेम प्ले करते नजर आ रही है. किल्स के मामले में अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं. यहाँ पर टावर्स के मामले में भी दोनों सेम रहने वाली हैं. बट अगर बात की जाए आइटम्स के मामले में, यहाँ पर Valhalla वंस अगेन यहाँ पर लीड करते नजर आ रही है. 3 प्लेयर्स डाउन रहने वाले हैं, 3 प्लेयर्स का रिकॉल होने वाला है. बट लेट्स सी, यहाँ पर 1 प्लेयर तो वापस आ चुका है, 2 प्लेयर्स अभी भी यहाँ पर रहते हैं. कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो भी टीम वापस आते हुए नजर आएगी. बट राइट नाउ ये बॉयज अपने लिए एक नया प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं. यहाँ पर जिस तरह ये होली ड्रैगन को टेक डाउन करना चाह रहे हैं, एंड होली ड्रैगन को टेक डाउन करके उसके बाद एक नया प्लान होगा. मे बी एक भाई वंस अगेन होली ड्रैगन को यहाँ पर अपने साथ लेके आगे की तरफ बढ़ते हुए शायद नजर आए, या तो फिर अभी नो डाउट इन्फिनिटी की बात की जाए तो वो यहाँ पर भी साथ चल के आगे स्लेयर की तरफ भी. मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है कि हाउ यू गाइज कैन यूज़ थिंग्स इन दिस गेम. मतलब कि टाइम टू टाइम यूज़ करना इज़ लाइक अ मेन थिंग. अगर आप टाइमली यहाँ पर चीज़ यूज़ नहीं करते तो थोड़ा मुश्किल बन सकता है. अगर यहाँ पर आपको
चीज़ें थोड़ी सी भी लेट करते हैं, यहाँ मतलब एक मिली सेकंड, छोटे से सेकंड्स के अंदर भी आपने कुछ लेट कर दिए तो वो आपको बाद में बड़ा पछताना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। बट लुक एट दिस भी, हर प्लेयर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर प्लेयर यहाँ पर एक अच्छी गेम प्ले निकालने की कोशिश कर रहा है। टावर्स को डिस्ट्रॉय करना इज द मेन थिंग, मतलब मेन टावर तक यहाँ पर टीम वल्हाला कब पहुंचेगी नोबडी हैव एन आइडिया। बट राइट नाउ एचपी काफ़ी लो हो रहने वाली है, बट जिस तरह ही अगर बात की जाए एक टीम वर्क की तो वो यहाँ पर देखने को जरूर मिलता है। बट फाइनली काफ़ी लो एचपी रहने वाले हैं, यहाँ पर भी एलिमिनेट होते हुए शायद नजर आए। बट द क्विकनेस ऑफ दिस गाइज, लुक एट दिस, मतलब कि भी जाते जाते भी किल्स नहीं देते, यहाँ पर अपने आप को जल्दी से रिस्टोर करेंगे, रिकॉल करेंगे और वापस से यहाँ पर अपनी गेम के लेके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यही टाइम रहेगा क्योंकि यहाँ पर जितना यहाँ पर स्लो डाउन होंगे मुश्किलात उतनी ही बढ़ती हुई नजर आएंगी मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर स्लो डाउन होना इज लाइक ए गिव अप। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला स्लो डाउन इज ए गिविंग अप एंड वी हैव अ 5 versus 15 kill point as well as 2 versus 4 towers destroyed. Team Valhalla has successfully cleared the entire bottom lane of towers and अगर वो bottom lane के through अपने players को लेके आते हैं, so they have a great chance of actually destroying the base of Team Apex Gold. And the legendary was performed, a kill all players down, yeah. I think उनके एक ही प्लेयर ने 3 प्लेयर्स इकट्ठे टेक डाउन किए। दैट इज ए ब्यूटीफुल टीम वर्क प्ले, जिस तरह के आप कहते हैं कि टीम वैल्हाला इज नॉट गिविंग अप एनी ग्राउंड, एस्ड। And like I said, this player Natalia is a great mage hero to be using with, and especially ऐसा कोई player जिसको अपने mage को बिल्कुल properly use करना आता, उसके skills और abilities को बिल्कुल to the top, उसका potential fully explore करना आता हो ना, तो Natalia is a nuclear weapon in the hands of a good AoV player. And that is exactly what we've been seeing, because only through Natalia, I think they got 3 to 4 kills at one point, and they have successfully destroyed about 6 towers of Team Apex Gold, and they're coming again and again to defeat the Infinite Slayer. And अब आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे इनके प्लेयर्स लाइट अप हो चुके हैं, इनकी ये लाइट्स निकल रही हैं, which means they are powered up to the max. 13 to 12 to 11 points, and they have a lot of abilities that they have garnered, और उनकी यहाँ पर items भी बिल्कुल top level के हुए हैं जो ये अब attack, I think what they're trying, I'm not 100% sure, but I think they're trying to destroy all of the towers. They are building a rampage. 7 towers destroy कर चुके हैं, easily वो mid lane से भी आ सकते थे mid उनकी base तक, but what they're doing is just they're trying to show कि देखो हम कौन है and what are we bringing to the table. Because this, they could have easily destroyed the the main base from the bottom or the mid lines, but they are trying to go for an all-out, massacre, slaughter कर रहे हैं वो अगली टीम को, इनका हर tower destroy करने पे तुले हुए हैं. Yeah, and I think I'm correct in saying that they are trying to get all 9 of those towers as well as the main base. They are bringing an unbelievable level of dominance to this game, something that wasn't even seen by Necro Esports, where that dragon is just ranking up lots of HP. अब उनकी HP काफी कम हो रही है, we can see that beam of laser energy being employed by Natalia, and Team Valhalla is just bringing everything they've got. They are coming in with guns blazing, and kafi low HP, and they're going to come to the main base, and there we go. I am pretty sure that is a confident victory for Team Valhalla. Wow. That's it. Valhalla once again. Valhalla is a winner. Amazing performance. भाई 1 by 1, मतलब कि एक विन भी नहीं दी एपेक्स को यहाँ पर. अमेजिंग परफॉर्मेंस भाई, अमेजिंग, मजा आ गया. और मैं कहूँगा यही टाइम रहता है जिस तरह टीम परफॉर्मेंस निकाल के आती है. लुक एट दिस एमवीपी बैक टू बैक, द सेम गाय फ्रॉम, मतलब कि दूसरी साइड से अगर बात की जाए. बट व्हाट ए गेम प्ले, मतलब एपेक्स को यहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ पर भी स्टेडी और करना चाहिए. नो डाउट ये गिव अप नहीं रहने वाला भाई. एपेक्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो एपेक्स यू गाइस डोंट बी डिसअपॉइंट, मतलब ये एक स्टार्टअप रहने वाला था, बट आगे हमारे पास एक अच्छा सीन बनता हुआ ज़रूर नज़र आएगा. और अगर प्राइस पूल की बात की जाए इस राइट नाउ करंट जो हमारा पास सीजन 1 चलता हुआ नज़र आ रहा है, 1.5 लाख का प्राइस पूल रहेगा गाइज. एक खूबसूरत 1.5 लाख का, मतलब कि राइट नाउ अगर बात की जाए, नो डाउट दिस इज इट. मतलब कि कुछ देर में मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन रहेगा. लुक एट दिस, द प्राइस पूल ऑफ द डे ऑफ सेमीफाइनल के बाद जब फाइनल आएगा भाई, टोटल प्राइस पूल इसका रहने वाला है 1.5 लाख. मतलब दिस इज एक्चुअली गुड, अमेजिंग. बट यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी टीम्स ने मेहनत की है, और अगर बात की जाए उसकी तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा मिस्टेक, क्योंकि
अगर बात कीजिए जो टीमें जो प्रॉपर लड़ के इस स्टेज तक पहुंची तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त सीन था। बट लेट्स सी कि उसका क्या सीन बनता है और मतलब कि आगे क्या बनता है, क्योंकि कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मिस्टी, क्योंकि कल का दिन जो हमारे पास फाइनल आएगा 2 टीमें ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी हैं। जी बिल्कुल, एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेडली अवेटिंग टुमारो बिकॉज कल ही हमें एक दो बहुत ही डोमिनेंट अग्रेसिव एंड टैलेंटेड टीम्स का क्लैश नजर आएगा, doubt. टीम नेक्रो esports एंड टीम Valhalla. And but other than that, I would also really like to congratulate and थोड़ा सा अपलॉड करना चाहूँगी to team Apex Goals as well as team Arrow, because coming to this point was something of a miracle itself, bringing so much talent, confidence, determination कि आप talent hunt के semi-finals तक पहुंचे और आपने you gave it your best. In the end, it doesn't matter कि you win or you lose. At the end of the day, it's if you gave it your best. So I think the performances that these two teams showed us, मतलब कि हार जीत तो होती रहती है. You keep marching on, you keep walking a soldier's path. आप अगले मार्च वाले इवेंट में ज़रूर, जिसका इससे भी बड़ा प्राइस पूल रजिस्टर कीजिएगा, जिधर I am sure कि team Arrow and team Apex Gold are going to bring us something amazing out of the box. So I am really glad that I got to witness and I got to cast, and I'm sure you too, Demon, as well, my co-caster, कि हमने आज इतनी एक beautiful gameplay देखा from 4 different teams: Arrow, Necro Esports, Apex Gold, and Valhalla. And that is the type of players and the talents that we're looking for in Pakistan. क्योंकि आप ही जैसे players हो सकते हैं, आप ही जैसे young youth हो सकती है जो इस चीज़ को आगे लेके जा सकती है. And I for one am very glad to witness the awakening of this Arena of Valor tournament. अच्छा, so इस आप देख सकते हैं कि tournament bracket में we had so many teams who took part from all the way from the qualifying rounds to the the quarterfinals, to the semi-finals, to the finals. कितनी हमें यहाँ पर teams नज़र आ रही है, and मैं दाद देना चाहूँगी इन सारी teams को जो they gave it their best. They started from the bottom and they worked their way through the ranks of talented teams and they came out to the top. And Apex Gold ने कितने different teams के साथ जीत के they came to the point where they had the honor of playing the semi-finals. Same goes for Team Arrow, and I am really looking forward to seeing these teams more in other Arena Valor tournaments in the future. But apart from that, really excited for the finals tomorrow, where we are going to be announcing and seeing who becomes the grand champion from between Team Valhalla and Necro Esports. Really, something amazing is going to be happening tomorrow, क्योंकि जिस तरह की ये teams हैं, all of the audience should be on their they should be on their tiptoes. Get your popcorn ready, get your cokes ready, get ready tomorrow for this show of your lives, because the grand champion जो कल आएगा, I think they're going to be something amazing. Exactly, and कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू दिस चैनल. यहाँ इस चैनल के ऊपर ही आपको फाइनल देखने को मिलेंगे. लाइक दिस स्ट्रीम, और कल के दिन के अंदर आप अपने सारे बॉयज़ को इस स्ट्रीम को शेयर कर दें कि इसी चैनल के ऊपर कल के दिन के ऊपर आपको फाइनल्स देखने को मिलेगा, जिसका 1.5 लाख प्राइस पूल रहने वाला है. तो मेक श्योर यू गाइस फॉलो, लाइक एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, ताकि कोई भी फाइनल को मिस ना कर पाए. तो सी यू गाइस टुमारो. कल वापस मिलते हैं एक जोश के साथ.